Hello, guys. What's up? Welcome to episode 2 of Football Talkies. Welcome to Indie Football Podcast, powered by Ultimate Champions. So, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं. बहुत टाइम हो गया. लास्ट एपिसोड शायद था एक दो हफ्ता पहले. So, it's good to be back. Not because कि मतलब I was looking forward to it, but because भाई Liverpool जीत चुकी है Carabao Cup. And I know a lot of haters will call it a tin pot trophy, but a trophy the trophy होती है. Right. So today we have Shopnilda here with us, who's a lifelong Liverpool fan, and we have also one or two more guests coming. So we'll wait for them as well. So Shopnilda, how are you feeling? It's amazing. After last night, it's absolutely amazing. You never know ki, with the teenagers that we had, like them, how they will perform and all, and you almost lost all hope, kind of, है ना? तो कुछ hope करने के लिए था ही बचा ही नहीं था. At least 7 or 8 senior players were out, and the thing is कि even if you had some sort of मतलब वो होता है ना एक मतलब जीतने की एक होता है ना वो जज्बा, तो उसके हाँ, लिए भी कुछ उसके लिए भी तो कोई फ्यूल तो चाहिए ना. तो वो true, फ्यूल true. भी नहीं था. फिर पर when you see कि these teenagers, these kids, literally academic graduates, I guess, and like Hmm. one of them or two of them even had their first मतलब senior appearances, and that is also on the Wembley final. So that is something, that is a big occasion. Like everybody says that these are like tin pot trophies, like Mickey Mouse trophies. I always think these are the tournaments which usually give these teenagers some sort of platform to showcase their skills. And so it's a big thing for them. It's a big thing for them, and I'm just absolutely glad that they had this opportunity to showcase their, and they went up against like one of the মানে, badass bullies in the Premier League. If you True. consider Caicedo, 150 million pound worth Caicedo as one of those bullies, so one of those, I so it's mean, not absolutely even in a bully section, but altogether, like just coming up against such a big team at such a point. I mean, they are like 20-year-old. Like I'm 21, and I can't even go to play a local football game, and those guys are playing a bloody cup final. एंड आई वाज in स्पीकिंग that. अबाउट दिस एज वेल कि चीज होती भी है कि सोचो आप खेल रहे हो, आप अच्छा नहीं करते, ठीक है 90% बेस समझेगा, बट वो टेन हाँ परसेंट आपको नेक्स्ट चार चार महीना गाली गलौज करेगा. So हाँ sure like sure. you have that thing at the back of your mind and then you come back. So we have a second guest here, Mr. Shaunakda, who's also a die-hard Liverpool fan. Let's welcome him as well. Shaunakda, how are you? Good, and you? I'm good Must as be well. good after the win. Exactly. How's the Josh? Hi, sir. It's good. It's high now. Yesterday it was drunk. Yeah, It was high. yeah. After effects. After effects, celebratory effects. Yeah. So, what do you think? Can we win on Wednesday night? I feel it's possible. I feel it's possible, but it also depends on who we are going to play. I mean, if our second goalkeeper is our first goalkeeper now, so that leaves us with a third goalkeeper, which is Adrian. And with Hmm. Adrian, I even. don't think Kelleher is like tired enough to like leave him Yeah. uh, from the squad. But I don't think that Adrian will play. Kelleher will play for sure. But I hope that we give some rest to McAllister and Diaz because they are Endo, overworked tremendously. Endo, Obviously, Endo, Elliot. Endo's not going to play because Endo is already on a whim. Hmm. It was that Protective he boot. was offered him. Hmm. Oh, Hmm. so precautionary, I guess, at best. But Hmm. we need to give McAllister and Diaz some sort of like rest because they are overworked severely, Hmm. Hmm. and we can't risk that. Exactly. No, I think after this win, I think the youngsters will have a great moral boost, and I think they can do the job. Yeah, I think they can do the job. No, obviously not. Even if they don't, I won't be disappointed. But then again, they can do the Yeah, job. yeah. But in general, what I would feel is that माने हम लोग का कुछ हद तक स्क्वाड बहुत अच्छा है. Like for midfield and defense, we have a good quality of players. We have Timiskas coming back. We have Bradley.
and then we have Kwanzaa, Konate. We have that covered. Midfield, I believe that McConnell and you have that guy, Bobby Clark, Bobby Clark, and you Bobby have Clark. Neoni, right. Neoni. No, no, Neone won't play. If he plays, I'll be surprised. Like, that guy's too raw. Hmm. That the other guy, I forgot his name, but he's also there. But so we have a good list of midfielders and defenders. But for attackers, I feel that we are a little bit short. Yeah, Like in terms of luck obviously. as well. But the only Mm-hmm. two attackers But we I probably have think right that now. Nunes might play. Nunes or Salah might play Wednesday. I feel Will they so. play a full game? That is No, my no, they main won't. question. No, no, they won't play a full game. Someone, But we have to someone from the worry. medical, someone from the Uh, medical team must be lying about the fitness. Like we all saw how he mm-hmm, jumped off mm-hmm, the whole thing. He and Shubos lying. yes, I So think that's the good decision they have made because just like again, nothing sort of tar or Soboslai happens. Oh yes, Soboslai is also fit, I guess. So he can play in the mid, I guess. But then again, like the way club operates, I won't be surprised if he just if it feels a random bunch of players because Nah, he that knows can how also important the happen. Yeah, Premier League that can is. also happen. That can Him also do something happen. like that Yes, will be really, really weird. yes, that can also happen. I think that will happen because I think all the kids will play this game. But It's pretty, and I think yeah, like, but Southampton are good team. So then again, don't know. Yeah, but I have absolutely no idea then of Southampton कौन है player अभी मतलब literally after they relegated to the championship I yeah. have absolutely no idea. No, I I kept no only track know of the that they players. are top of the table right now in and they championship. have That I know. Bella Oh Kotchap damn! as well. I didn't know Yeah. that. Oh No, no, they damn! are I top didn't of know. the table and they are unbeaten in some number of games, I guess, 20 or something or 20, yeah, नहीं बट something. वो था So अभी so, लास्ट so, दो ओ गेम में बैक अभी टू बैक हारे हैं ओ अच्छा 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 देन तब तो ठीक है मतलब ये दे हैव देखते वॉक so पीटर्स is it is it is दे it हैव is it safe to say that our Liverpool B squad is coming back to the Premier League again? हम्म I mean, एग्जैक्टली I बी see a lot स्क्वाड of players and I'm interested. There are a lot of good guys here as well. So you have Bazunu, you have Walk Peters, Harwood, Bednarek, Manning, Armstrong, Rothwell, Smallbone, So Edozi, Benedict Mara, was there Armstrong. already like, previously. Benedict was there And this you have at Southampton. Aribo as well, Aribo Che Adams. So they have a good yeah they have a good against the run squad for this will be a good they team. have a good squad J They could Adams do Oh, is it. nice. good J Adams and Aribo these guys these two These players are good players. He's back. Mm-hmm. Mm-hmm. It's bad. Mhm. Still These are play. good players. And they will Yeah, like give you a good run for your yeah. money. Yeah, see, Mm. that's the thing, right? They will give FA Cup, which is fifth round, so it's not going to be that easy, right? So let's hope for the Obviously, best. obviously. Yeah, let's hope for the best. That's what I can say. And But it then Like, again, also is like, a thing like who will I'm come gonna after ask, that. I'm gonna ask you mhm, something. I'm gonna ask you something. Would you like, given the injury crisis that we have, and that Nunes might be closer to coming back to the his full fitness, and the question is, would you choose Dan's over Nunes on Wednesday I'll choose Dan. for I'll choose starting? Dan. For starting, For Dance. start, I will choose Dan. because we No have question. seen some glimpses, right? We have seen some Mm, glimpses from Dan because mm, one header from him was literally saved by Petrovic, and it was a really mm. really good hit. Yeah, It was a really really good really good header. hit. Yeah, Mm. no, I will give them the chance because after this Carabao final and all of them played not only just few minutes, right? Almost 30 plus minutes they have played, so they have got this confidence to go again and do the job. So I will definitely give them the chance rather than fielding in Soboslai or Nunes. They need that Yeah, run, even if we lose, that doesn't matter. But the experience they will gather and the confidence they yeah, will get playing these games are important. yeah. Like 100%. we Even like for we me, have I to would be start we Dance. also we also have to be we have to consider the feasibility of going on for like all four tournaments all at once when Yeah. we have so many injuries. Thing. Exactly. That's the So reason also. even if No, let's even get like, eliminated I in don't want FA to Cup. no no I don't want to like put this right over there to just so that some people like call me hater or something like that or something like that. But the thing is कि मुझे लगता है कि it's a hit and miss
And if we have so many injuries, so I think it's a hit and miss. And if we do get kicked out from FA Cup, it might be a blessing in disguise. I Hmm, don't know. We have so many fixtures there, hmm, and we need these players to be to like work like engines. hmm. And it's won't be possible if we have so many games at hand. It's Yeah, tough. It's obviously that. absolutely tough. Yes, obviously that. And I'd rather choose Europa over FA Cup any day. I'd rather choose because that's the only cup that Klopp hasn't won with us. So Yeah, exactly, that's the exactly. another thing. Yeah, I will rather have us winning the Europa Cup than FA Cup. So I'll obviously give prioritize to a Europa Cup. So, that's the thing because see, yeah, as you said that we can't win quadruple right now with so many injuries. Let's face it. It is the fact. Just because we won yesterday doesn't mean that we will going to. Maybe we can, and if that happens, then it will be a miracle. Obviously, that will be the biggest. That would be a massive thing. That would be a massive thing. Like nobody is Yeah, expecting quadruple. I guess no, nobody's in expecting the quadruple. in this EPL history, I don't think some team have gone for quadruple with so many injuries. I don't think it has ever happened. Then again, Like we have to. Yeah. I'm not saying we should throw the match. I'm just saying we shouldn't risk our Hmm. senior players for that match, Hmm. 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 Yeah. because Obviously, they are Gomez, like massively Gomez will overlooked. always play. Gomez will be the captain, I guess, because Oh Gomez my will god! play. Yeah, your Imagine favorite player. Gomez being captain of Liverpool FC. Oh my god! Yeah, yeah, and Simicas will also play. Simicas will also play. Yeah, And so Simicas and Robbo Simicas, will play some Gomez, part. Both of them will play some part, I guess. Simicas, yeah, Clark, Simicas. Gomez, Ah, Simicas, what McConnell, these four are meant to start. You have Bradley as hmm, well, probably. You hmm, have Dan as I well. think I think that is why Bradley was subbed off earlier in the match. earlier, yeah, yeah, exactly. Same as Gakpo. He used to play. Yeah, He used to play on Wednesday. He will play. He will play. So there's But and I think maybe Nunes will play a part, and Salah will also play a part, and as sub, Sobo right? will also play a part. They As will sub. not start. Obviously, they will not Uh, start, but they will play a part. These three will play a part. So then again, we just have to hold them for a bit, for 60, 70 minutes. Then Sobo and they can Salah can come and turn the game around. Yeah, obviously, by chance, yeah, we have to hold them. That's the thing. We have to defend well. That's the biggest issue. the Southampton might be a championship team right now, but these players like this Bednarek, Walker Peters, they used to Hmm. play in the Premier League like a season Yeah, back. yeah, yeah. Yeah, so these are Obviously, and they experienced were players. good. These are They experienced were players. good. Yeah, They they were were really good. good. Like, They are really good. Walker. I remember having Walker Peters in my FPL team, and Hmm. for 2 or 3 matches straight, he gave like 26 points or something like that. He Even was Jay really Adams, good. the Yeah, season before 21-22, he was great in that season. He was great. Yeah, Jay yeah, Adams was yeah. great. So no, yeah, obviously they're a very good team. They're a very good. So I'm gonna, coming I'm from gonna, I'm gonna Liverpool, let's just move a little bit to the Chelsea side of things. I know that all of us we have deep hatred for Chelsea. I personally do, and I never shy away from the fact. I think you are a very shitty club. So Mm, but I'm the host right now. So mm, out of that, so I felt that one of my most favorite players, not only from this squad but in general from Chelsea, was always Conor Gallagher. I felt yeah. the work, like the kind of a yeah, he workhorse he was is. tremendous. He's He an was asset for tremendous. any team. For Mm, whatever formation you're playing, he will do mm, something. mm, So he was again very strong of a contender. Then we had Nicholas Jackson as well, जो भी बहुत अच्छा खेल रहा था. But mm. उसके बाद हाँ, थोड़ा वो off and out हुआ. Then we have Petrovic as well. But in general, like for me, Gallagher was honestly the best from Chelsea. I felt he was the most, somebody who we were looking at. So for you guys, who do you think was the most dangerous Yeah, from for Chelsea? dangerous part of I would say Gallagher only and Nicholas Jackson. Jackson was good, he was actually very good, but then again, this guy is still raw. Means he is like Nunes, means poor man's Nunes. He is like poor man's Nunes. Yeah, exactly like that. Uh, very poor man's Nunes, but he has got talents, right? And Gallagher, I am a big fan of Gallagher from his Crystal Palace days. I've always admired him. I have always admired him. He's a very good player, and he fits the Klopp style of play, that Jejen pressing and all those things, press, press, press.
fits that, and he can score. Yes, he was unlucky, and another one he missed very bad, that he shoot straight away to the Keller when Cole Palmer gave him a great pass over there, and he directly shot it into his body. Apart from that, he was the only one working, running around, creating things and all those. He was going into the position where he could score. That the flick he made, that was a brilliant flick. If you see that, he was extremely unlucky on that because the ball was hit at a very high pace, and he just flicked it. That was very unlucky in my opinion. Another one he hit again a bar post, I guess. So he was unlucky, to be honest. But he is the player I admire the most. And then again, Enzo was pretty below average. So was Kaikedo. Kaikedo obviously did little good after the second half, means after 70-80 minutes. But then again, Gallagher was the main player. 100%, Gallagher, 100%. Gallagher Samula, covered the most spaces in last night's Hmm, match actually. hmm, And if we talk about impact, na, so see, Cole Palmer had a brilliant, मैंने मतलब अभी अगर मैं सीजन तो खत्म नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोल पार्मर had been brilliant for Chelsea this season. Okay, hmm. but last night I felt कि Jackson had a much bigger impact than Cole Palmer. Obvious, He was obvious. actually trying. He was actually trying. Hmm, And hmm, if we talk about Conor Gallagher, Conor hmm, Gallagher is one of those players who doesn't have any skills to show, who doesn't have any flashy things to show, but he is always there trying, doing something. Like he is a workhorse. He is everywhere on the hmm, pitch, and hmm. he does that Exactly. every single match. Hmm. He does. Agree. He does. Hmm, And hmm, these are the kind of things that get overlooked. hmm, And I've seen Chelsea fans literally bashing, like if we talk about Angry Dan Man or some famous ones like that, hmm, I've seen them literally bashing Conor Gallagher for missing those chances. But hmm, imagine, like, where the fuck are your strikers? Conor hmm, Gallagher is not your striker, but he's finding spaces to find the ball at that place. hmm, hmm. Huh. He's not a clinical Exactly, finisher, exactly. You, but he's you, trying. yes, He obviously, finds and the you, places. hmm, Where the fuck are your exactly, strikers? Where the fuck are exactly, your exactly. He fits into the this thing, spaces. exactly, this particular thing, not finishing your chances, has been hurting like Chelsea throughout the season. Hmm, And like everybody was saying ki when Nkunku comes, things would get sorted out, but it's not like that. We have seen Nkunku like last night no, and the I previous, am not you know, impressed by Nkunku. I am not at all impressed by not Nkunku. inclusive. Like he would find one or two chances and he might convert one or to them, but his off the ball movement, his Hmm, attitude, his everything, like it felt very blunt. It hmm, felt very blunt, very ineffective, hmm, very how should I say this? Uninspiring, very hmm, uninspiring. hmm. You know, Exactly. I and don't. I'll just Yeah, put this Nkunku out. was very. Sorry, Andy, I'll just put this out. Gallagher averages 2.4 tackles a game. He Hmm, averages uh, 1.5 key passes per 90. hmm, This is his average stat. You hmm, put this stat in any other team across Europe, he'd be hmm, contesting for the probably the team of the season of the league. hmm, You hmm, put this stat in Man City, and they would probably be ahead of us. They have hmm, had Matthias Nunez and Kovacic, who hasn't been that good for them yet. But you put a player like mm, Gallagher in that team, they do well. The thing is, what he does was supposed to be done by Caicedo, but hmm, that is somehow not being done by him. And then you hmm, have Enzo. hmm, Enzo is a quality player, a proper hmm, baller. But be it mentally or be it just the ambience that recently his performances have dropped. And even last game, I didn't find personally anything which would, like, tell me that, okay, that guy is something that great. In the exactly. contrary, yeah, McAllister was dominant, like fucking Hmm, dominant. Like he was being constantly, he had the ball, he was winning it. Like, I remember there was particularly 5-6 minutes where we were losing the balls completely. We went been having one good attack, and then snap, McAllister comes, he wins the ball, he runs, hmm, and then he took the entire team with him. hmm, So hmm, that hmm, is the impact. See, World Cup winning is a very big thing. Even Franco Armani is a World Cup winner. hmm. But for somebody who has played a part in that, you would at least expect him to properly show something like that, right? Probably he's too young for to have a mindset of that thing. But ultimately, I feel that it's
not going in the right. It's not only about the direction; it's about being in the wrong bus as well. Yes, They're currently in Yeah, the obviously. wrong bus. Yeah, he is That's in what. the wrong bus first of all, and then again, if a manage, I don't think Pochettino is a good manager at all, to be honest, because you see, he has bottled every cup game. You cannot with us kids playing in our team. He was aiming for the penalty shootout, as I heard this morning. He was aiming for the penalty shootout. If you are playing for the penalty shootout against 17, 18 years kid against then you don't have that mindset. Once you have that mindset, it conveys to the players, right? It conveys to the players. Imagine telling Enzo Caicedo and these players in Kunku, yes, we are going for the penalties, be prepared for the penalties, defend against a team. We have only Diaz at the attacking, and Dan and all those things. Against that team, if you are going for defense, then I don't know if you are a good coach, or you really should be doing your job in at least in EPL, and among teams like Chelsea, who is spending billions of dollars every summer transfer window. So that's the thing. Pochettino, one thing I agree with. Todd Bowley is basically playing FIFA. Todd Bowley is Mm, basically playing FIFA. yeah, yeah. Obviously, he I has might, no plan. I want to add something on this matter, like what Pochettino said. Na, see, the thing is, like, if we're talking about the match, I said that if the whole thing goes to penalties, na, Mm. there's a high chance we would lose because penalties Obviously, need some sort of obviously. experience, and these Hmm. kids, no matter how good they are not they don't have any experience on penalties, Hmm. and that's Hmm. where the Chelsea senior players come in. But No, I but get that so point. exactly, it makes absolute sense if he had planned that. But the thing is, to say something like this on a post-match interview where everybody is looking at you, every fan who expects you to be in your best behavior, in the most professional way possible, you don't say those things. You don't Hmm. say such things like we went for a draw, but we want to play like that just to hold them off, huh? Hmm. But we just want to get the whole game to the penalties. You don't Hmm. say such things like that. You don't And say such things one, like that. yeah, obviously, and that's another thing is, see, I get it that if Chelsea would have gone to the penalty, 80% chances would have been they have won the match. Yeah, But again, yeah, there yeah, were 20% chances that we would have won, right? But if yeah, if they were attacking us, there was 70% chance that we could have considered a goal at that time if they would have attacked us. At least then there would have been more chances of that thing going to the penalty than they defending themselves in their own half and letting us to means attack, and then hoping that we won't be able to score. That's the thing. And it's also on the mentality. See, the last 10 minutes of the game, 80 to 90, we were the ones who were on the backhand. So Hmm, even the commentary team, they were like, okay, now Chelsea will attack. So when the second hmm, half started, it was us with the first attack. So the commentary team hmm, was like, what are Chelsea doing? You hmm, have the upper hand, you have more hmm, experienced players. hmm, See, hmm, players like Mudrik, players like Madueke, no matter how bad your quality may be, you are still better subs than what we have. hmm. You are Exactly. actual substitutes. And Yes. this was the historical part. You have so many fast players. You don't even have one guy to actually pass the ball. We Yes. have sub all of Exactly. them out. Hmm, 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 Who's hmm. supposed to pass them? Yes. Obviously, and I didn't okay, understand okay. what's the point of. I'm joining back. I'm joining back. Some sort of problems Okay. going on. Okay. I'm joining back. Okay. 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 Yeah, that's the thing. I don't understand the substitution, right? Means what did Chalova brought in the game? I didn't understand that substitution going on. I didn't understand what that Mandueke or that guy did. Means who are they and from where they have actually bought them, Chelsea? I don't understand from where they got these players. Means how bad is the scouting team is? That's the another thing. I mean, it's not only about buying them, it's about like I never thought that it's for example, you bring on Mohamed Salah and then you tell him कि bro you don't आपको सामने नहीं खेलना आपको defend करना है. It's Hmm. like bringing in Elliot and Yeah, saying, "Ye, don't obviously, go defend." obviously.
player being back. Obviously, and you are making those attacking changes, and then you are sitting back and defending. What's the point in that? I don't And understand that the point. and I would always prefer Palmer and Nicholas Jackson for penalties over Madueke and Mudrik. Modric, They have yeah, played yeah, the game. They have played yeah, 90 minutes. So why do you sub them out? And so yeah, the entire exactly. even see this, I feel a lot of the people here who are watching the stream right now and have joined in, and even you guys, you have watched WWE, right? How does it Hmm, operate? There's one heel character, there's one face character. hmm, So I mean, when you are a face character, you cannot be heel. So hmm, I hmm, feel hmm, that somehow Pochettino is trying to, be the bad guy. Like he's trying to bring out Jose Mourinho, but somebody has to tell him you are not him. Jose was exactly. Jose because Jose won the UCL with Porto. I mean, see, I don't have a lot of respect for the guy, but I have to appreciate him that he has done shit. He Hmm, has done shit. hmm, Mourinho has won the UCL with that club. Every club as he has went to, he has won at least one trophy other than Tottenham. hmm, But the hmm, entire thing with Mourinho, the way he speaks, he actually gets the result out. hmm, For this person, I feel it's very. How do I explain? Like Pochettino, it's just he's good. That does not happen. So, actually, I will just go to the comments once. Shayan Bhai flop Mudrik. Chelsea's biggest flop is Mudrik. I mean, they have a competition, and who's the biggest flop? We have hmm, Enzo leading the race. Then hmm, we have Caicedo catching up hmm, soon. So it's a hmm, very big competition right there. hmm. Bhai, how are you? Long time no see. Trust me, pal, you are not him. I know, right? See, I know that he's not him, but sadly, Poch does not know that. अच्छा आप लोग के लिए उस टाइम पे कुछ टाइम पहले आप लोग का था ना कि रियल मैड्रिड वंस पोचेटिनो हाउ डिड दैट एंड अप चेल्सी के बाद and Doen Bhai is also here guys Doen Bhai is one of the co-founders of IFP. He's one of the Okay. मेन मैन बिहाइंड इट इज अ लॉट ऑफ Oh. वर्क भाई गोवा Hmm, जाते हैं बट फिर भी अपने वॉच अलॉन्ग्स पे होते हैं बीच के सामने वो भी मतलब कोई रैंडम लिवरपूल वर्सेस शेफील्ड गेम देखते हुए बिकॉज हम लोग hmm, वो स्ट्रीम कर रहे हैं hmm, hmm, डोएन hmm, भाई hmm. जोसे भाई का पीएल कमबैक होगा कि नहीं व्हाट डू यू गाइस थिंक व्हिच क्लब एंड विल इट हैपन और नॉट एंड विल इट वर्क और नॉट थ्री थिंग्स See, the thing is, it won't work on the long run. Maybe he will get a trophy or like FA Cup or something like that. No, he can't win the league this time unless he goes to some place like City where he can spend the amount of money he wants. Then again, it will be tough. And in PL, I guess if it happens this time, it will be with Chelsea only because this is the only club he knows in and out, and he has been there for a lot of time. Means there is a emotional connection with their fans and all those things, and the fans will give him some time also. Maybe if it happens, I think it will be Chelsea and other. I don't think any other club will go for him because City won't go for him for sure. Newcastle, I don't think so. They will also go for him. But then again, yeah, Chelsea is my biggest bet that highest bet that he will come back to Chelsea. Chelsea may I don't trust Chelsea. Chelsea is such a ship that no shit like that can happen. So for me, Jose that is should like one Jose of the block, should and even definitely Newcastle as go. well. Hmm, I feel that Newcastle is linked with every other guy, every other big manager. They hmm, are like hmm, कि hmm, इसको hmm. खरीदना है, Yeah, इसको Newcastle. Yeah, लेना है. it might work for him with Newcastle, but then again, you are not going to win the league with Newcastle. It just can't happen. You can't win the league with Newcastle. Means I am saying this many. I have said this about City too, but then again, yeah, you know that. I guess so. Jose should definitely go I mean, to any NT. He is the ultimate trophy manager. Uh, what do you think? Don't you think Jose is past his prime? Like his antics and Obviously, he's past. his strategies are मतलब पुराने जमाने का अगर if I Hmm. use the word Ah, as yeah. uh, so Shopkeeper once said, with due respect, outdated. Jose is outdated, exactly. outdated. Jose is I outdated. I'm not saying, yeah, I won't say obvious. I won't say he's irrelevant in world football right now, but I think his tactics are outdated. Like, see, Hmm. for serious. Hmm. Like, Hmm. I mean, I Obviously.
those tactics won't work in bigger teams. Like I know Chelsea fans are really rooting for Jose Mourinho, but the thing is, like they want Jose Mourinho to be the stopgap between like this in this transition period. But why Hmm. would a egoistic manager like Jose Mourinho would come to Chelsea just to be a stopgap? Hmm. You know, Exactly. And I just to be a think that, stopgap. And where yeah, where where obviously. where where you have where you have an owner like Todd Bowley, Hmm. who's literally like who has everything on his own strings. Why would a manager like Jose Mourinho would want to be a puppet under such owner? So Obviously. I don't get that. So whenever a Chelsea fan Jose says ki Mourinho might be we want anything Jose but not Mourinho to a be the puppet. guy, Yeah, Jose Mourinho might exactly. be anything, but he is not a puppet. He will not means listen to Ted Boyle and whatever tells him and buys him. He won't do that. Obviously, he won't do that. He won't do that. And One plus, more He won't. problem He which would I want feel is that with complete Jose, control over all the. hmm, ah, Hello. you go on, go on. uh, He would want absolute control over all the transfer decisions and like scouting decisions. So and Todd Bowley, like imagine an owner like someone who writes the checks, visiting your dressing room and trying to give a prep talk to the players in front of your managers. How demeaning and how insulting is that? Like these it- fucking Americans, they have absolutely no idea how a football club should work. Imagine if, Pochettino is Hmm. standing right there. Imagine hmm, Pochettino is standing right there, and he's the fucking owner. He's giving pep talk to the players, and the manager is standing right there. Like hmm, how insulting it is for the manager. hmm. मैं किस लिए And मैं फिर job छोड़ दूँ? Something like that. मैं फिर job छोड़ and दूँ, something like that. obviously, and it is also insulting for the players too, right? You can have a pep talk earlier or something, but what are you telling to those players during a game or before a game, just before a game or in the What sort interval? of what sort of respect? What sort of respect would the players have for the manager Hmm. if they think that Your voice is cracking a bit. Is it your internet or is it my the internet? owner is Voice is cracking a little bit. Shonam, is it my internet or is it his No, internet? no, no. He freezed. His screen freeze. Yeah, screen freeze it. I'll just remove it and I'll just bring him back. Hmm. Wait, I mean, Go it's set to pretty Pahar. funny. Honestly, in my opinion, it's pretty funny that whatever happens. And see, I'm very controversial, and I'll say it again out loud. The last time these many particular racial, no, I'll get banned again. So, हाँ इतनी इमोशन में गए कि पैडल यूनिवर्स से पहुंच गए भाई Shopnilda is one of the best we got in our Bengal scholars group. I Hmm. mean, there was this one particular line I remember a lot. He said, this in Bangla, he said it out loud again that আমরা যেই ম্যানেজারকে পছন্দ করি ওর ফেভারিট প্লেয়ার হলো হচ্ছে জেমস মিলার যে স্ট্রাইকার থেকে গোলকিপার সব খেলতে পারে সে स्ट्राइकर से गोलकीपर सब खेलते पारे मतलब हम लोग का जो फेवरेट No, मैनेजर है in यूर्गन क्लॉप हाँ. उसका फेवरेट प्लेयर जेम्स मिलर जिसको सब पोजीशन खेलना आता है मतलब आज बोलोगे सीडीएम कल बोलोगे स्ट्राइकर वो स्ट्राइकर खेल लेगा दैट इज एन आइडियल क्लॉप प्लेयर और हम लोग दोष देते हैं अपने प्लेयर्स को कि तुम लोग खेल नहीं पाते तुम्हारी गलती नहीं और है मैनेजर की गलती है हाँ. और अभी अभी आप लोग जेम्स मिलनर को बहुत मिस कर रहे हैं. वी आर मिसिंग हिम मैन दिस सीजन. हाँ. I'm having some network issues here. नो Yeah, वरीज yeah. नो वरीज Swapnil, on a scale of 1 to 100, what is your love for James Miller? फिर से penalty बजे पहुंच गए Swapnil, Hello. yes, Yeah, on sure, a हाँ. sure, sure. scale of 1 to 100, what is your love for James Miller? I don't know what is his age? Like 885? That would be my rating. That would be my rating. He's forever in the field. He's forever like he's never too old. He's never too young. He's just stuck in that age, I guess. Uh, I don't know how long he's serving as a player.
for the Premier League, but it's a massive. He's a massive player, and people say he's a utility player, but I refuse to say that. He is not just a utility player. He had been he had been with us in our most like precious moments in the recent history, and it's not because of he was just a utility player. He was a very important player for us. He was a very important player for us. Yeah, So one thing yeah, I liked about him is means he was benched again and again, but he didn't complain. You see, he didn't complain. He exactly, was the exactly. king. He knew Yeah. his limits. He knew his age was not allowing him like to do what he does, what he used to do actually when he was at his prime. So Mm. he understood the whole point. So that's what professionalism is, right? That's what professionalism is. Like But look at Mane, look at Sadio Mane. Like when he left, he decided to leave because he knew he won't give the uh, what he used to give in his prime, and he knew the Premier League is tough. He won't be the same. And look at him now. Like he is at like the Saudi league, Mm. Saudi league, and he's not doing well actually. His age is finally coming up to him. Mm. No, Obviously. even Mm. Firmino as well. So yeah. I was reading one of his book, and he was pretty clear that he knew that he won't be one of the main guys anymore, and yeah. for him to just be there and consume the salary, he felt it was better for somebody else Mm. to come in, and Mm. that is what it's like leaving on a very high, Mm. which the most famous player in Ajax did not do at the moment. I guess we all know the name, but see again, I have a lot of respect for the guy, so I A cannot just clear say dig at Obidullah. he's sadly not here right now. He's a great Ajax fan. Uh, Brother is the secret imagine, Santa of the imagine, Ajax players. imagine, imagine you don't imagine you're a Liverpool fan and you have some sort of like hatred for Henderson for what he did, and you idolize Salah, and you meet Henderson before meeting you have a chance to meet Salah, like like seriously. Like, I'm just imagining the coffee chat. It's always a great fan. Could you just give me Salah's phone number? I just have some message for him. Just the number. Exactly. No, that's And the there was spot. actually this thing that Salah and Salah and Henderson, they both had a kid on the exact same day, and and the day like 9 months prior was the UCL final. So everybody was like, like okay, that was Ah. a imagine great night. imagine Mm-hmm. Klopp imagine Klopp's managerial prowess was so strong even they're having kids at sync. Imagine that. Hmm. Imagine Yeah. that. True, true chemistry. True True chemistry. chemistry. Chemistry of SEO. One and now. Something that Dejan Lovren would be very jealous of. Yes, Exactly. 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 where is And Lovren right now, by the way? Still in, Russia, I guess. Yeah, he I don't was know. he was at he was at no, he's Zenith, I in guess. League One. He's in League One as of Oh, Oh, he's nice. in League One. Nice. now. Yes. Oh, Last I heard of him, he was playing at Russia when the whole yeah. Russian league was Oh, Hmm. like, Ukraine war. ha 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 ha. Hmm. Hmm. Actually, moving to a few other Hmm. leagues. Yeah. Hmm. दोइन भाई is दोइन भाई is a very big Madrid fan. So दोइन भाई आपकी क्लब तो वापस से जीत रही है ला लीगा. अभी हम बोल देंगे कि फार्मर्स लीग है, फिर आप गुस्सा करोगे कि हम आपको हरा नहीं पाते, बट स्टिल अभी आप लोग तो जीत रहे हो, मतलब सो कांग्रेट्स टू यू. जिरोना जिस हाइप से आई थी उस हाइप से वापस चल गई, एंड बारसा इज सेकंड एट द मोमेंट, सो kudos to them. And also one more thing that the retired dinosaur Luka Modric has 6 goals and assists, and the next generational Lionel Messi Pedri has 4. So we all know who's the real deal. On Hmm. it, Gomez is the real deal, said by Ankan Bhai. Welcome here. He has been rooting for Gomez for quite a long time. Ah, The love is ah, unreal. This dedication, both this of them love dedication, gutka, I guess. Both of them love having gutka. this dedication is like very priceless. No, I but can. on a serious level, I actually given the video like the last game. So when Gakpo was put aside, Gomez was like, "क्या भिला के दिखा."
अब हिला के दिखाया, and I saw fear in Chilwell's eyes. Like I want to see that in the Euros, that Chilwell gets off for Gomez on the left back position. So if that Hmm. happens, Hmm. So then again, Gomez, Gomez was piss poor yesterday, but overall he has been good. I would say that. But yesterday he Gomez I was was would piss actually poor. like, he was decent. He did his job. Yeah, this. Nothing Yeah, he did exceptional. his job. I Yeah. would Yes. absolutely hate to admit it, but he has been like decent recently. Hmm. Like, but I hate to admit it because of my personal matlab, whatever I have with him. But he has been decent recently, and Hmm. okay, like when we needed him, he somehow stepped up and he showed some sort of what he used to be like before his injury. So I guess that's it. That's it. That's what I can say about him because I cannot physically say anything good about Gomez. I practically hate the player. I don't know why, but I practically hate the player. Like it's a very thing. No, no, It yeah, is. yeah, exactly. He has been good. Apart from yesterday, he has been good in my opinion. Yeah, yeah, he has been and playing out of position as the way Gomez has performed in the absence of of our both left back is top notch. 100%, Pokemon 100%. to the. So yeah, yeah, true, true, true. Playing in the left back, he has Gomez done. has stepped up. Like Mm, Gomez Man, was not the father, but the father we needed. Like that yeah. kind of a situation. The Mm-hmm, father that's who mm-hmm, stepped up. a very disturbing revelation. If that if, that's a very disturbing revelation. mm, Like मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि like throughout the season we when we said कि we needed more depth in the squad and we needed more players and some of us even said कि we should call back some loanies that we sent out and everybody was talking about Tyler Morton. Everybody was talking about Tyler Morton. We should get Tyler Morton back. We should mm, cut off this like loan deal and we should get him back. mm, But I had no idea that we had James like McConnell and Bobby Clark because obviously we don't have that exposure to watch every academy matches. We just get updates, right? mm, Like most of us get updates. Like yeah, uh, so obviously. we don't get any academy updates. Like I had absolutely no idea that Dance was a player for Liverpool. I had no idea. Yeah, exactly. Yesterday, I knew that there is a Yeah, player called Dan. like No, no, two, that two, match two of before the that, players I saw. Luton. Two, exactly, I saw Uh, him on the bench, and I was like, who the fuck is this player? yeah. Then so everybody wanted Tyler Morton back, Owen Beck back, and I think there was another player who was doing wonders in Bolton. No, not Bolton. I think Wolves. Blackburn Rovers. Oh, Blackburn Rovers. I think. oh, Blackburn. Who was Yeah, Blackburn Rovers? I don't know. Maybe It was there. Elliot I, only. Elliot was huh? playing for Blackburn. Elliot was No, playing no, for Blackburn. No, 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 no. no. No, no. We said Morton was on loan on Blackburn last season, I guess. Then he's oh, now right, on right. Wolves. So He everybody has. kind of wanted Morton back, but Oh, like, Hull. but Sorry, Hull then City. then we uh, Hull. then we saw like these kids like Bobby Clark and McConnell. Imagine not playing for the senior team. Uh, like I think Bobby Clark and McConnell played for like 5 minutes or 6 minutes. They got like whole, but yesterday's match Yeah, and to McConnell play got some more minutes in that Union game, I guess. He got some more minutes, like 30 minutes. Europa. Yeah, Yeah, Europa, yeah. Europa. Yeah, he got some 30 Now minutes. I am not sure, but yes, I think so. Yeah, but imagine your dance and you haven't got any senior minutes before yesterday's match and you are introduced into the game and you are exactly. practically acting like playing as a striker as a main striker of the team and you physically bullying their defenders who were like Axel Disasi. You're bullying Axel Disasi, you're beating him at aerial duels. Like that takes guts. That takes Hmm. guts. I don't know Yeah, what obviously. sort of like inspiration Jurgen Klopp has instilled in this team, but the culture and everything that he stands for, it trickles down to the very, how should I put this? It's the very academy that we have right now. Like I know that we all know that we don't have a La Masia. Our Hmm. academy is not as like as sound as La Masia.
and we barely have graduates who make it big. I think the last one is Trent Alexander-Arnold, and we hope that Bradley is one of them Yeah. who breaks it. No, I Breaks am it. very much surprised with Bobby Clark. I didn't know that Bobby Clark was Exactly, such a great exactly. player. Means he has that The Imagine, last potential. graduate was Jones. The imagine, last graduate was imagine. Jones. No, no, Jones. Oh yeah, yeah. Like Last Jones graduate is was not a, Jones. like, Jones is decent for us, but I won't think Jones is going to start for any like big teams like, apart from us. If he had been playing for any other team apart from us, I won't think they will choose Jones Fatih as would a like this starter. answer. Fatih would like this answer. Making I, up points. I don't because, Making because up I points. think Jones like I think Jones is decent enough for us, but he's not a world beater. That's all I'm saying. Like Trent, uh, you yeah, look at yeah. Trent, No, no. you look at Trent, Trent is means he is on expectable, different level. Yeah, expectable. You look he at is already world Conor class. Bradley. Yeah, Yeah, you Trent look at is Conor generational. Bradley. Trent You is look at Conor generation. Bradley. You look at Conor Bradley, and you know you can understand that this guy has the spark. You just look at some players and you know. Now, Yeah. if he himself destroys his own like career going forward, then that's on him. But you just know that this guy has something Hmm. tangible, you know. Yeah. And Hmm. but I was very impressed by Bobby Clark yesterday. I saw him literally like physically beating Caicedo. Yeah. Imagine He just you're just came. 18. You're just Yeah. 18 and you just beat Hmm. Caicedo, a 150 million worth defensive midfielder, like physically. I don't think Bobby Clark is actually a DM. I think he's more of a CM, box to box CM, Hmm. Hmm. and Hmm. he completely overhauled Caicedo, and And Hmm. the guy that is was great. fearless. He's very Yeah. fearless. I see him Exactly. like Aggressive and McConnell just says that. fearless and McConnell aggressive. is He. much more. Yeah. So even Exactly. McConnell, you see in his face, he's like the good guy of the group. Hmm. Hmm. He's Hmm. Uh, like Hmm. Hmm. silent. And Hmm. then you Hmm. see Hmm. uh, Clark, he's like, that guy, the smaller brother Yeah. of the Yeah. gang leader. Yeah, yeah, imagine just like Swapnanil said that imagine you just come in and you are just going for Kaikodo and you are just winning that ball and you are playing moving forward with the ball with no fear, absolutely no fear, and just makes a very good run. Unfortunately, he couldn't pass it, but then again, that's the thing. That's the thing we were missing in those academies all these years, I would say. But yeah, and kudos to Klopp, making these players train with the first team for such a long time from January, I guess. Yeah, from January. So they also know what it is like to be with them, and they at least it's not like they just came in with these players. Oh, this is Virgil van Dijk. Means the players also, our first team players also are aware of these kids. This is Nioni. This is also a very good thing that Klopp had done. And the thing is, when you are in a effect or in a Carabao Cup final or any final, and you just throwing away these kids and bringing subbing of likes of McAllister and all those things, Gakpo, and you are bringing in these kids. So imagine the amount of confidence Klopp must have on these kids to do that in a final. That also in a final. That's a very good decision. It's brave call from Klopp, I would say. There's Shahosh in Bengali, and then there's Dushahosh. Klopp হুম, stands for তো Dushahosh. দুঃসাহস এক্স্যাক্টলি দুঃসাহস Klopp বাট stands এটা for the other কাজে one. এসে গেল, কাজে Mustafa, লেগে গেছে, এক্স্যাক্টলি, And that's good as well. See, fortune favors the brave. जो हिम्मत we करता है need डेली वही भरता है. এক্স্যাক্টলি. Hey guys, I have to leave now. Okay, I have to leave now. Okay, bye. It was Bye. pleasure having you. Pleasure. Yeah, yeah, yeah. Bye. 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 So before we finish our segment, I just have like one more leak to talk about. Talking about loanees, we have Sepp Vandenberg in the Bundesliga, mm, and he's doing really really well in the mm, Bundesliga. And we yeah, also have Zabi Alonso there, who's supposed to be mm, our new manager, who's linked with it. Just before that, Shreyas Bhai, welcome. apparently, Sorry for the late apparently, reply. Huh? mm, apparently he's And coming. I don't know. Apparently, apparently. श्रेयस भाई FA कप का लास्ट का प्रेडिक्शंस भाई लगता तो है लिवरपूल क्वालिफाई करेगी लिवरपूल सिटी और कौन कौन है वेट FA कप Chelsea है अभी तक. Chelsea है अभी चेल्सी तक.
ये तो निकल जाना चाहिए, ये तो निकल Hmm. जाना चाहिए। Who's देखो, Chelsea playing? यहाँ से कॉवेंट्री उठेगी। सी कॉवेंट्री उठेगी, बॉर्नमथ, आई फील, न्यूकासल, मैन सिटी। I'll just go with it. I'll just say Leeds, Man U, Okay. Brighton and Liverpool. इसमें से आई फील जे आपकी बॉर्नमथ को कुड बी द रेयर वन, क्योंकि देखो भाई, मतलब एनीबॉडी हु हैज बीन फॉलोइंग द प्रीमियर लीग दे विल नो बॉर्नमथ हैज अ वेरी गुड स्क्वाड। They have Yeah. a very good squad and they've invested in it. कि मतलब you have Chris Mepham, you have Tavernier, you have Solanke, you have Kirks. मतलब you'd be like कि भाई कौन है ये लोग? But on a very base Yeah. level Yeah. they are very good players. देखो उनके पास एक 13,000 का स्टेडियम है। उनको ऐसा भी नहीं कि वो लोग बहुत ज्यादा पैसा जनरेट भी करते हैं, बट स्टिल दे Uh-huh. मतलब दे डू प्लेंटी। सो उस वक्त उनका अच्छा खासा है। बट after that, coming back to Uh-huh. our original point about the Bundesliga, so Xabi Alonso has broken the record for the most goals won, for the most wins won. So, Hmm. what are your point of view on like Xabi Alonso, his Alonso. thing, and Sepp Vandenberg? Yes, you're audible. Like, like, to be honest, what he's doing is wonders at Leverkusen. But if I be brave enough, if I'm being brave enough to say this, the thing is ki I don't know. I'm very skeptical. I'm still very skeptical about bringing Xabi Alonso this early because he just had one good season and it's an exceptional season. Like imagine beating Bayern Munich at their best, like what they do at Bundesliga. And this takes a lot of like planning and everything. And I'm not taking anything away from Xabi Alonso, but it's still so too early. Like I want like imagine Xabi Alonso, Gerrard, these are like Liverpool legends. So you don't want them to fail at Liverpool. Like what Spoil we the legacy. see Spoils the legacy. exactly, we don't want them to spoil their legacies. Mm. Like it's a good thing that Gerrard didn't come to Liverpool because imagine looking at him like failing at his job at Liverpool. True. Huh. You True, na. you That can't that just that hate that that would guy. be that would be. You'll I can't hate that guy. exactly Even if he's you'll not. failing at Saudi league, I can't bring myself to hate that guy because he had such a important soldier for us all these years, and he was the only one who kept us going relevant. But the thing is, True, true, ki, true, I don't want if Xabi Alonso indeed is coming, I don't want him to fail. But true, I true, true. also don't want him to join Madrid or Bayern Munich. So if he's coming, I'm glad that he's coming. I just don't want him to fail. I just don't. It's very early for Xabi Alonso in his career to manage a club like Liverpool, but he knows the culture. That's a safe thing. He knows the culture. He knows what Liverpool stands for. So I guess that's a. Uh, so I guess he would fit right in if you talk about the culture. But I just don't want him to fail as a manager at Liverpool because it would be very tough to see like him getting the sack or something like that True. because he would Failing need as a time. manager doesn't Also, touch a also, player's legacy. we all know that. We all know that. We I'm not saying he would like he would tamper his legacy if he doesn't success if he doesn't get success in Liverpool as a manager. But the thing is, it would be tough for us to see him like that. Honestly. Imagine Barcelona fans when Xavi like announced his retirement, not retirement, when Xavi announced his leaving the club. Imagine how they are feeling right now. Like Xavi Even was before not this, they had Ronald Koeman. Koeman is such a big legend. See, it's not about just the legacy. See, for example, me, I am somewhat of a recent football viewer, right? I've watched for the past 10 years. I don't know yeah, what the greats before that did. But when I see them fail as managers, it just leaves yeah. a bad taste, at least even for the fans Exactly, as well, exactly, exactly. even for It us it as well. leaves a very bitter taste in your like a whole thing, I guess. And that's what I'm scared of. That's exactly what I'm scared of. Like I love Xabi Alonso. I don't want him to join as managers for Real Madrid or Bayern Munich. So yeah, he knows the culture. He would fit right in at Liverpool. Everybody would love him. The fans would
would go bonkers around him. That's not an issue. But the thing is, Premier League is different. He played at Premier League like some 10, 12 years back. Okay, no, even before that, and rules 15 have years changed. probably. Everything is changed. Football is dynamic. Everybody knows, and he plays his team in a very certain formation, in a very certain way, which we Mm. don't play. And I think we have the kinds of player who are mature enough to adapt to anything, but it will take time. It will take time. So if he's coming to Liverpool, I want our owners to decide on that as soon as possible after the season gets over, because he would need these players back on back on training as soon as possible in the preseason, and he needs the preseason to decide True. what he needs further. And I think we will get some transfers, and I don't want to talk about transfers because that's a headache when you have owners like FSG, but whatever. Coming to Ankush bhai's question, I'll just put one thing here. Personally, for me, I would like to see Nagelsmann, because I have made this point clear that when you have a certain group of players, if you continue with the same formation, the same style, it is often good because these guys have it like built up in them for quite some time. So Nagelsmann plays a very similar style of football to Klopp, and he is a winner, Mm, of course. We have seen like, the quality of football he plays, the way he does it. He has done it before. So coming back to Ankan Bhai's question, that if Liverpool, if not Liverpool, whom do you prefer to win the PL? Arsenal or City? For me, I personally cannot tolerate Arsenal winning the PL after what Arteta did after mm. beating us. Just a small touch upon this. If it's not City or Arsenal, I would personally feel that it should be West Ham. I'm a very West Ham neutral fan, but it won't happen. We all know that, at least not this season. So I'll just go back to chocolate. See, uh, I don't want any direct rivals to win PL, obviously, but I don't want City to win again, like fourth time in a row. I don't want that. So City is a big no. United, though, I would never want. Chelsea, so let's forget about Chelsea. But I would also not want Newcastle because now they have oil money, so they will get that like new phase. And I know that Newcastle won't win the PL. I won't actually, like, given the choice between like City and Arsenal, I would choose Arsenal. So it doesn't matter ki what Arteta did. Look, any passionate manager would behave something like that after beating a direct rival. So um, those are parts and parcel of the game. I don't look very much deeply into that. But given the choice between, like, I'm only taking City and Arsenal as an example because uh, Liverpool, City, and Arsenal are on the title race right now. Like we are like every three of the each and every team is like 1 point behind of each other, I guess. Nah. So Two given the points. choice, 2 points or 1 point, whatever. So given the choice between City and Arsenal, I would choose, like, if Liverpool don't win the league, then I would choose like Arsenal because I can't see City winning another one. It's very like it's boring. It's very predictable. I mean, it's just like it's very depressing to see if City like wins another. Like, I don't want that to happen. Achha, while we are on it, if I'm not mistaken, Van Dijk is the only defender to have won the Carabao Cup final player of the match award twice. It's probably only him, or it's a tie between him and Terry. So he Yeah. reached that again. It's Congo to him. We know his quality. See, come back with the VVD. Yes, I would now. Mhm. And coming to the yes, agree with Jijo. Can't agree again. It's a very. It's not only us. I feel it's the entire Premier League this time. How Mhm. much more? And see, to some extent, it's completely like blunt cheating with them. We have seen it, Exactly. and I'm not just talking about IFP. See, take any city game. I would go up to this level. I'd say that City have more fans in South Asia than they have in their own city. I would be Exactly. presumably sure because I can see the open seats.
Liverpool usually have open things because they had the entire like it was completely blocked off, so they had the open stand. But in Exactly. if you watch City game, you can see they take a drone where you can see like there are bunches of seats open in the middle, and then the post match this thing comes and they're like the Exactly. 99% attendance. How is that possible? And so it's like it's somewhat blunt cheating. And even there were some reports that for me, you run a club and I just give you money, and that's from a sister company which does not exist. It's Exactly. like avoiding tax for God time reason. Like you were making up like some like like random shit. I give the city ownership some sort of credit because when they took ownership of the club na, they Mm. literally invested on the grassroots level. So they changed everything, they improved everything, not just the stadium, not just the first team, they changed everything, they improved everything on the grassroots level. So I give them this credit. That's why their academy is very up and coming in the Premier League. Mm. uh, but I just can't see them winning another one. Like seriously, it's very frustrating for me. It would be very frustrating for me if I see City winning another one. It's like money winning all over again, and I don't want that. I, I And it's quite like definitely I don't mean, want that. how many more times? Yes, how many more times? Seriously, like I how many started more out times? in just toxic. I mean, अरे Ongkonda, वो with तो all honesty, I mean, I have seen worse City, and we know one yeah, in very very yeah. commonly. And I have seen Like even worse Manu fans. after winning the League Cup last season, like even the United fans were like, "Ki, the Klopp and Pep era are coming to an end." So I was like, these are like trash talks. Look, any team that wins, like the fans will trash talk. That's parts and parcel of the game. I don't go like nitpicking I on mean, that. honestly, if we win all the four cups, I will probably start my own debate on how Klopp is better than Sir Alex Ferguson. See, I am shameless, very Exactly. shameless. These are trash talks. These are trash Yeah, talks, exactly. fans are fans are allowed to have trash talk. Fans are very emotional and they are passionate about the club, so they are allowed to have trash talk. So that I won't. Not, nobody takes trash talk seriously, I guess. So I mean, yeah, shit is after supposed to happen. like, I would agree with Ankon on one thing that Arsenal fans are being very cocky lately. I've seen that. So yeah, so and after beating Liverpool, obviously, they seemed very very cocky. They That seem was a very very. very good win. That was a very good win. But In all honesty, we were pretty shite. We were pretty shite. That outclassed on every single level. we were pretty bad actually. Like we lost two games, I guess. One against Spurs, one against Arsenal. Against Spurs, we played really really good. That was a VAR scandal. But against Arsenal, like I don't have anything to like defend Liverpool there. Like we were pretty like bad. Acha, on a different take, what is worse? Everton is relegated, but United wins PL, or City gets relegated and Everton gets oil money. Like I don't know what comparison is this. Like I just don't any of these scenarios to happen. I don't know what I don't know. I have very mixed I emotions would on that. choose the second one. Because even if they get oil money, it will still take them 3 4 seasons. And if City is relegated, Exactly. we may get our trophy. So I will Like, go like, with like number two. getting oil money doesn't necessarily guarantee you trophies, Exactly. right? Look at Exactly. Like, PSG. look at PSG, obviously PSG. PSG is not just run by oil money; they are run by like Qatari states, like literally Qatari And state. see, one thing people don't understand, PSG is good not because they are rich. PSG is good because the entire league is poor. That is why they Exactly. are good. Exactly. It's not because Exactly. they are rich. It's because the entire league That is was the poor. same. That was the same case. That was the same case. Like if you talk about like Bundesliga, like before, like Even only Syria, Dortmund. Even exactly, huh? Even Syria. Like 2 or 3 seasons back, we can't imagine anyone winning the Syria like apart from Juventus, right? constantly. Absolutely. So now sometimes Dortmund gave them a bit scare here and there. Are Celebrity in the house, Darshan Bhai. Big fan, Darshan Bhai, big fan. दर्शन भाई के दर्शन हो गए आज दिन और अच्छा हो गया
यार खुशी का मौका है तो मैंने कहा कि चलो ज्वाइन कर ही लेते हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रीम होगी तो मैं भी ज्वाइन कर लूं। आ जाओ दर्शन आ भाई जाओ। पार्टी हुआ था? दर्शन भाई पार्टी हुआ था लास्ट नाइट? नहीं यार पार्टी मतलब आज काम था तो वैसी पार्टी नहीं हुआ था, मगर हाँ सभी ने सेलिब्रेट तो किया ही था बिल्कुल। अब कहीं पब में गए थे क्या, मतलब नहीं देखने नहीं के लिए नहीं नहीं लाइव? नहीं घर पे ही देखे थे? मैं हाँ घर ही देखा था मैंने। वैसे अच्छा अच्छा कोई स्क्रीनिंग ज्वाइन नहीं की थी कल तो। अच्छा अच्छा अच्छा। Acha, guys, if you are new to the ones present here, the ones watching it live, IFP has a really good screening thing going on. बहुत ही अलग लेवल के इम्पोर्टेड बियर्स मिलते हैं। अगर मैच भी इम्पोर्टेंट नहीं है पर उसके लिए आ जाना, अच्छी कंपनी मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेंगी। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। प्लीज कम if we are in town, it will be fun to have you. कमिंग बैक, दर्शन भाई आप दिल पे हाथ रख के बोलो, कल का फेवरेट प्लेयर आपका कौन था? फेवरेट प्लेयर ऑनेस्टली एंडो भाई, मुझे एंडो कल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और स्पेशली ये सॉलिड। मैंने लिखा है फन कि किया है। जो मेरे थॉट्स थे ना व्हेन एंडो जॉइंड अस, वो हम्म। मैं ऑनेस्टली यहाँ पे बोलूंगा कि यार मुझे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं आप कह लो कि जस्ट बिकॉज 16 मिलियन की साइनिंग थी और थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, मगर हाँ हम्म। मैं कहूंगा कि मैं गलत था। और जिस तरह से एंडो ने परफॉर्म किया है थ्रू आउट दिस सीजन, इट्स आप कह लो कि फाइनली हमको एक पिवटल प्लेयर मिला है who कैन प्ले इन दैट डीएम रोल। होपफुली हाँ हाँ। ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस उसका कंटिन्यू रहे। कल एक्चुअली हम्म बहुत सारे प्लेयर थे पार्थिव, और हम्म आई थिंक 4-5 प्लेयर का नाम आप ले सकते हो। हम्म। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। केलहर बहुत अच्छे सेव निकाले। क्या था वो वैंडाइक सेव भाई, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे वो जो जो सेव निकाला था उसने, अरे बाप रे बाप। बाप रे क्या save मतलब था। और वैंडाइक अगेन हेडर किया, 2 बार हेड किया अगेन। मैं मानता हूं कि पहले वाले जो था, लोग अभी रूल बुक्स के हिसाब से हमको समझा रहे हैं और मान भी हाँ लेते हाँ हैं कि हाँ चलो हाँ ऑफसाइड है, मगर हाँ। दूसरा वाला कैप्टन्स परफॉर्मेंस जो कहते हैं ना, जो झराट करता था कि भाई राइजिंग टू द ओकेशन, राइजिंग टू द ओकेशन, राइजिंग टू द हाँ ओकेशन। बिल्कुल मतलब बिल्कुल मजा एकदम ही आ गया कैप्टन कल की मैच देख के। कल का। लाइक मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको लगा था कि ये जो बच्चे लोग हैं, लाइक बॉबी क्लार्क, मैकॉनेल, वो इस तरह का परफॉर्मेंस देंगे लाइक लास्ट नाइट? लाइक लाइक आप इमेजिन कीजिए, कुछ देर पहले मैं यही बात बता रहा था पार्थिव को कि अ, मतलब बॉबी क्लार्क ओवरपावरिंग काइसेडो, 150 million वर्थ प्लेयर ऑन द पिच एट वेम्बली। इट्स अ मैसिव थिंग, इट्स अ मैसिव थिंग, लाइक द कॉन्फिडेंस दैट ही शोड, लाइक होता है जो गुदा होता है ना, जो ही शोड, लाइक लिटरली I did बिफोर not know that we have James like this in the academy. Like seriously. बिल्कुल बिल्कुल। और देखो जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ऐसा है नहीं कि हमने सिर्फ खिलाने के लिए उसको खिलाया है। वैसे 90 मिनट्स होने वाले थे तब हमने इंट्रोड्यूस किया, मतलब क्लॉप ने इंट्रोड्यूस कर दिए यंगस्टर्स को। हाँ 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 मतलब उसको हाँ हाँ। पता है कि जो 30 मिनट्स आगे आने वाले हैं वहां पे मुझे हम्म फ्रेश लेग चाहिए। दैट्स व्हाई ही हम्म इंट्रोड्यूस बॉबी क्लार्क, मैकोनल, डैन को भी लाया उसके बाद, वो डेंस को भी। तो हम्म। बॉबी क्लार्क का तो हमने देखा है आई थिंक, और जिस थोड़ा तरह से बहुत, हाँ। आर्सेनल के सामने, हाँ। हाँ हाँ हाँ। मगर बाकी 2 प्लेयर्स बहुत ही, इवन उसको एक हेडर भी मिला था जिसको पेट्रोविच ने Dance सेव dance dance. हाँ हाँ किया, हाँ हाँ। डेंस। तो Fingertips. हाँ। बिल्कुल, तो ये जो यंगस्टर है वो आउट ऑफ देयर प्लेस नहीं लगे मुझे। भले ही हाँ। बहुत ही बड़ा ओकेजन अगेंस्ट, आप कह लो जैसे तुमने बोला कि 100 मिलियन प्लेयर्स उन लोगों के हम्म सामने खेल रहे थे, मगर फिर भी बहुत ही हम्म कंफर्टेबल लगे। और वी वर द हम्म बेटर साइड इन एक्स्ट्रा टाइम में, ऐसा बोलूंगा। सेकंड हम्म हाफ ऑफ जो नॉर्मल टाइम होते हैं उसमें चेल्सी के पास बहुत हम्म चांसेस थे, स्पेशली मैकोन केलेहर वाला चांस, सॉरी केलेहर क्या, वो गैलेगर वाला चांस जो जिसने हाँ केलेहर हाँ ने हाँ। सेव। मगर उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम आया उसमें हम बेटर टीम थी मेरे हिसाब से। जिस हाँ तरह हाँ से हाँ। हमारी मिडफील्ड काम कर रही थी, वो पास अराउंड कर रहे थे उनके,
देख के मजा आ गया कि हमारी एकेडमी कितनी अच्छी है. Excuse me. Divyajit Das said that is Endo better than Fabinho thoughts. I'll just like put two points. First of all, Endo का passing range Fabinho से हाँ, in my opinion किसी भी version से better है. But जो prime Fabinho था, मतलब at his very best for Liverpool, that guy could stop an entire 5-man attack himself. मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ना कि काउंटर रेजिस्टेंट टीम कॉर्नर में जो भी हो वो था फबिन्यो एंड वाइनाल्डम दैट डुओ. So हाँ. no, never in any way could you ever match with prime Fabinho. But yes, last year he had a very like in मतलब बहुत गंदा वाला decline हुआ था. उस wise Massive, Endo is better. massive इतना कहूंगा कि Endo is not the Fabinho that we wanted, but he is the Fabinho that we need right now, currently. Again, हाँ. the not the dad who came, but the dad who stepped up. like Indo has been so impressive ना कि वो जो निकला था ना वो क्लॉप का वो encounter with Endo when he first came in, we really need you, like that resembles right वाले that मतलब इतना मतलब कल मुझे वो मैं सोच रहा था कि जब क्लॉप ने बोला कि we really need you, like literally Your we heart, your really legs, needed your leadership, everything, all everything. things ऐसा बोला था. मगर हाँ, बिल्कुल एकदम सही है तुमने बोला कि फाबिन्यो जितना तो मैं नहीं बोल. आई थिंक थोड़ा डिफरेंट प्लेयर भी है दोनों, भले ही हाँ, डिफेंसिव हाँ, मिडफील्डर रोल दोनों खेल रहे हैं, मगर हम्म, मैं कहूंगा कि एंडो थोड़ा ज्यादा रनर काइंड ऑफ प्लेयर है जो हाँ, ज्यादा aggressive. एरियल ड्यूल्स में नहीं जाता. फाबिन्यो एरियल ड्यूल्स में भी मुझे लगता है कि बेहतर है एंडो से. हाँ, हाँ, अगेन अभी हमारे पास सैंपल्स है एंडो का छोटा है क्योंकि अभी पूरा सीजन भी नहीं हुआ और फाबिन्यो का हम्म, हमने 3-4 सीजन देखा है. मगर फिर भी हम्म, जो स्टार्ट है एंडो का बहुत ही प्रॉमिसिंग है. और एक और चीज किसी ने मुझे मेंशन की कि यार जापानीज बंदा है, 31 का है, तो आप 2 साल कम कर सकते हो उसके. तो वैसी फिटनेस होती है जापानीज जापान वाले को, तो शायद आप हम्म. 2 साल एक्स्ट्रा दे सकते हो उसको. होपफुली देखते हैं आगे इस तरह से परफॉर्म करना है. मतलब कुछ हाँ. नहीं तो Endo can be the James Milner of our team in the upcoming हाँ, years. वो तो कर ही And वो सकते हैं vibe भी है लास्ट. उसके वो अंदर, soft अरे spoken, वो तो always अरे smiling. एंडो तो सेंटर में भी खेल सकता है ना. हाँ, एंडो तो सेंटर में सेंटर भी बैक खेला, उसने CM सेंटर में भी CM खेला है उसने. भाई हाँ, उसने हमारे सेंटर में यहाँ खेला पे देखिए कर्टिस जोन वाज अ नंबर 10 लेफ्ट विंगर था. उसको हम है. लोगों ने राइट बैक खिलाया है. सो अंडर अरे क्लोज एवरीथिंग हमने इज तो पॉसिबल. अरे हमने तो हेंडरसन को भी तो सेंटर बैक खिलाया था ना. अरे वाइनाल्डम एम्ब्रे चैन खेला है भाई. एम्ब्रे चैन वाज प्लेइंग सेंटर हाँ, बैक. हाँ, 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 एंडरसन प्लेड सेंटर बैक, लाइक. भाई सबको ट्राई किया है, तो ऐसी नौबत ना आए. मगर हाँ, 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 वही ऐसे वो ऐसी नौबत ना दर्शन आए. भाई आपके आने से पहले हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग का जो मैनेजर है उसका प्राइम फेवरेट प्लेयर है जेम्स मिलर. जिधर खिला तो उधर हाँ. खेल लेगा. स्ट्राइकर से अरे गोलकीपर बिल्कुल. तक. अरे And डॉर्टमुंड अच्छे में भी था खेलेगा. ना उसका. अरे डॉर्टमुंड में भी उसका एक फेवरेट था ना, याकूब ब्लाज़ेकॉव्स्की. वो भी ऐसा ही हाँ. प्लेयर था. हाँ, कभी राइट बैक यूटिलिटी खिला दे गेम्स कभी. हम्म, यूजुअली मैनेजर के फेवरेट. इवन अभी जेम्स मिलर वहां पे भी बहुत सारी जगह पे खेल चुके. राइट बैक पे खेला, मिडफील्ड में हाँ, खेला हाँ, है, एक बार विंग पे भी डाल दिया था इसने, डीजर्बी ने. हम्म, तो सभी जगह जेम्स मिलर भाई प्रोफेशनल बंदा. मतलब कहीं भी आप खिला लो वो आपको 7/10 देगा ही देगा. वो एंड कभी मैं कंप्लेन नहीं अभी एक करता चीज भी कभी. बोलूंगा. वो ना एक जनरेशन का लास्ट प्लेयर है जो एक जनरेशन थी. बिकॉज आई रिमेम्बर हाँ, इंटरव्यू जब हम लोगों ने शायद पहली लास्ट ईयर 2 साल पहले मैंने वन द कैराबाओ कप. सो ऑल द हम्म, प्लेयर्स आर ऑन देयर फोन्स की पोस्टिंग लाइव जा रहे थे. ही केम अप ही हम्म, इज लाइक गेट आउट ऑफ योर फोन्स वी वन द कप लेट्स सेलिब्रेट. हम्म. वो हाँ, 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 होती है ना मतलब प्राइम इंग्लिशमैन जैसी. मतलब वो हाँ, अभी बहुत मिसिंग है. एंड ही इज द लास्ट ऑफ दैट जनरेशन. वो अभी जा चुका है. मतलब इट्स अ न्यू जनरेशन. पीपल आर मोर अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया. एंड हम्म, फुली सो. one day you are a god, the other day you are the devil. So it will be हाँ, हाँ, like that. एंड अभी उतना वो कम भी होता है. मतलब मेंटल उतना लोग ले भी नहीं पाते जितना पहले था. सी सिचुएशन चेंज होता रहता है. मतलब सीजन सीजन सो जैसा ही मतलब पीपल हैव टू अडेप्ट. सो कमिंग फ्रॉम लिवरपूल, दर्शन भाई हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर चेल्सी हु वाज योर बेस्ट प्लेयर. सबसे अच्छा खेला मतलब उनके टीम में से. मैं तो गैलेगर को ही बोलूंगा और पेट्रोविच को भी बोलूंगा. उसने 2-3 सेव अच्छे निकाले.
मगर ऑन आउटफील्ड प्लेयर मैं कहूंगा गैलेगर बेस्ट था उनके लिए। आई थिंक हाँ। काइसीडो जितने फाउल किया है बंदा पहले हाफ में 6 फाउल किया है मुझे याद है, और फिर भी उसको हम्म। कार्ड नहीं मिला। सेकंड हाफ में भी वैसा ही चलता रहा उसका। तो काइसेडो को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। डिसासी मैं बोलूंगा कि एक और अच्छा बंदा, डिफेंसिवली अच्छा खेला। हाँ एक दो हम्म। जगह पे स्लिप हो गया वो, मगर फिर भी अगर आप बोलो तो गैलेगर और उसके बाद डिसासी में कहूंगा। बाकी एक कॉलविल का भी ब्लॉक आया था जो शॉट लिया था हमारे, शायद हार्वी ने शॉट लिया था या फिर ब्रैडली, दोनों में से, मतलब राइट से एक शॉट आया था उसको हम्म। कॉलविल ने ब्लॉक किया था। बाकी कोई मैं हाईलाइट नहीं लगा मुझे कोई भी चेल्सी का प्लेयर कि बहुत ही अच्छा खेला हो, वैसा मुझे नहीं लगा। Fair enough. Like हम लोग का भी वही कॉल था कि like the first was Gallagher for me as well, and then it was Petrovic. So all in all, I feel that also एक बात है ना कि मतलब आपके पास जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हो, अगर आपके पास मैनेजर प्रॉपर नहीं हो वो मेंटालिटी वाला, then it's like very hard to be actually मतलब to do something. पार्थिव एक्चुअली उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जब एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो वो लोग सोच रहे थे कि पेनल्टीज के लिए जाए। भाई अगर आप देख रहे हो, आप मैनेजर हो, सामने वाले मैनेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं है सब करने के लिए, फिर एकेडमी के बच्चों को खिला रहा है, तो ये उसकी मेंटालिटी दिखा रहा है कि वो रादर देन गोइंग फॉर, आप कह लो कि विनर के लिए जाने की जगह पे वो सोच रहा है कि मैं पेनल्टीज पे ले जाऊं इसको। तो बहुत एक्चुअली ही एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने बाबा का स्ट्रीम देखा तो उसने बाबा ने भी सेम बताया कि सेम चीज बोला कि पहले तो वो मतलब पॉजिटिनो को डिफेंड करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहे थे। फिर वो काट के उन्होंने एक नया वीडियो बनाया जब उन्होंने वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस देखा। मैंने बोला कि यू डोंट से सच थिंग। लाइक हाँ अगर आप चाहते भी हो ना कि आप इस मैच को पेनल्टी से ले जाओगे, आप ये नहीं बोल सकते मतलब पोस्ट कॉन्फ्रेंस में जहां पे सारे फैंस आपकी ओर मतलब निगाह निकाल के मतलब आपसे लिटरली आप पूछना चाहते कि आपका खेल रिएक्शन क्या पे क्या है। चल रहे हो। देखो अभी हाँ चेल्सी की सिचुएशन एफएफपी की वजह से है कि भाई वो नहीं सैक कर सकती उसको, अभी अफोर्ड हाँ नहीं कर सकते वो लोग। हाँ कोई हाँ हाँ। मेजर सेल होगा समर में, फिर ही कुछ होगा, या फिर समर में एक रीसेट कर सकते हैं वो, इसीलिए वो हम्म, बचा हुआ है, वरना तो उनके उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आ रहे। और उसके अलावा एक और चीज उसको बोली कि भाई हमारे प्लेयर थक गए थे, ये हो गया वो हो गया। हम्म, भाई लिवरपूल मतलब हमने लूटन के सामने मिड वीक में खेला है, फिर हम्म। हम फाइनल खेल रहे हैं, चालू मैच में एक और मिडफील्डर हमारा इंजर्ड हो गया और थक आप रहे हो। ये वही। अब वही वेडनेसडे को भाई हम अलग साउथहैम्पटन ही से लेवल खेलेंगे। पे है अब पोचेटिनो। वेडनेसडे को हम फिर साउथहैम्पटन से खेलेंगे। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा तो फिक्स्चर कंजेशन है हम लोगों का। और उनका तो मैच तो पोस्टपोन हो गया था ना, उनका जो पीएल का मैच था वो तो पोस्टपोन हो गया था। हाँ पर हमको तो खेलना पड़ा था लूटन का मैच। लाइक इतना ये इंजरी का ऐसे 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 इंजरीज हुए हैं ना हमको। उसके बाद में भी ये फिक्सचर की हालात है। उसके बाद में हमने फाइनल खेला, हम जीत के आए और बिल्कुल। विथ 17 18 ईयर ओल्ड। सो दैट टेक्स लाइक लिटरली दैट टेक्स गट्स। एंड ये तो मुझे लगा कि पोचेटिनो शुड हैव सेड समथिंग समथिंग लाइक टेंजिबल। लाइक ये तो मुझे लगा बहुत बहाना बहाना टाइप्स हो गया। लाइक हम्म। ये तो रोना रोना बहाना टाइप्स हो गया मेरे को लगा। बिल्कुल बिल्कुल। मगर कल की विक्ट्री बहुत स्पेशल थी, इमोशनल हो बहुत। गए कल हम्म, जीत के बाद, मजा आ गया हाँ एकदम। मतलब भाई ये चाहिए था, लाइक मतलब मेंटली भी ना ये चाहिए था। आप देखो ना कल हम लोग जीते, हम लोग के 3 स्क्वाड ऑप्शंस बढ़ गए। क्लार्क, मैकॉनल एंड मैकॉनल। डैन आर नाउ कॉन्फिडेंट यंगस्टर्स। सो हम लोग हाँ का डेप्थ बढ़ गए एक मैच जीतने से। एंड मैं अभी पढ़ रहा था दैट नयोनी विल प्रोबब्ली स्टार्ट द साउथहैम्पटन गेम। सो ये ना छोटी छोटी चीजें होती है। एंड हाँ I've said this before, I'll say it out loud again that जब क्लॉप छोड़ेगा he will leave the best squad in the world for a new manager.
इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके फाउंड पास वैन डाइक जैसे प्लेयर्स हैं जो अभी मतलब एक लेगेसी पे है। यू हैव साला, वैन डाइक, यू हैव सम मतलब लुइस डियाज एज वेल। मैं प्यार से बोल रहा कल बहुत अच्छा खेला, मैं प्यार से बोल हाँ रहा। You have some good youngsters as well, like fantastic youngsters. You have good utility players like Jones and etc. And then you have a special batch of players like McAllister, Soboslai, फिर आपका गैक्पो, कोनाटे, जो ना मतलब वर्ल्ड क्लास से थोड़ा नीचे, बट जस्ट दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं कि अभी हमको जाना है उधर। बिल्कुल तो इससे बिल्कुल बेटर आप क्या चाहोगे एज ए मैनेजर? बिल्कुल मतलब हाँ अगर हाँ कोई हाँ कल कल आता भी है, मतलब एंड कोई एक सीजन कोई प्लेयर साइन नहीं भी करता है, let's say in a very distant world, you don't even sign one player, the squad we will have even tomorrow can be easily a Premier League top two squad. We can battle for that. Injuries वो तो भाई मतलब कुछ बोल सकते, but in general with the quality we have. बिल्कुल So बिल्कुल। और कल ही मैंने किसी का ट्वीट देखा, कोई बड़ा लिवरपूल का कंटेंट कंटेंट क्रिएटर है, बाहर का है, उसने लिखा था कि भाई जो भी नेक्स्ट मैनेजर होगा, अगर वो थोड़ा भी अच्छा होगा ना, ही कैन बी द बॉब पेस्ली टू यर्गन हाँ क्लॉप्स हाँ 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 शैंकली, ऐसा किसी ने लिखा है। तो एकदम सही बात बोली उसने भी, और तुमने भी अभी हाईलाइट जो किया, वो वो दिखा था कि वी हैव दैट फाउंडेशन ऑलरेडी बिल्ट। अब देखो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी अच्छी हाँ हो हाँ गई हाँ है, हमारे यंगस्टर अभी सेम ही जगह पे ट्रेन कर रहे हैं, सेम ही फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं जो हमारी फर्स्ट टीम यूज कर रही है। तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे क्लब के लिए। जो मेलवुड में था वो पहले थोड़ी पुरानी हो गई थी सिस्टम, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि यंगस्टर दूसरी जगह पे अगर आपके ट्रेन कर रहे हो तो उनको पता नहीं है कि किस किसको वो लुकअप करे, किस तरह से फर्स्ट टीम में चीजें होती है। तो ये जो अभी हम बोल रहे हैं ना कि एक से सेंटर बना है, बहुत ही हमारे लिए या फिर आगे वाली जो भी मैनेजर आने वाला है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी ये। और हाँ अभी तुमने बात किया साउथहैम्पटन, तो भाई उस पे तो क्या लगता है, मैं ये क्वेश्चन तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ। देखो अभी इंजरी की सिचुएशन जिस तरह से है, अगर ऑप्शन आपको दिया जाए कि मैं तो चाहता हूँ तीनों जीते, हम तीनों ट्रॉफी जीते जो बाकी रही, मगर एक ट्रॉफी आपको निकालनी हो तो मेरे हिसाब से तो ये एफए कप होगा कि यार अगर नहीं भी जीते तो चलेगा, क्योंकि बाकी तो दो जो ट्रॉफीज है उसमें हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है और वहां पे हम जा सकते हैं। अगर इंजरी इश्यू नहीं होता ना तो मैं ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पूछता, मैं तो कहता कि हाँ हाँ तीनों के पीछे जाओ, मगर अभी थोड़ा सिचुएशन वैसी है इसीलिए। ना मैं वही कह रहा था कि ऐसा नहीं कि हम मैच जाके थ्रो करके आए, बट द थिंग इज कि हम मैकेलिस्टर और डियास को और रिस्क नहीं कर सकते। मतलब दे आर मैसिवली ओवरवर्क्ड। सो इन इन देयर प्लेसेस अगर हम एकेडमी के बच्चे खिला भी देना, तो ऐसा नहीं कि हम मैच थ्रो कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम मैकेलिस्टर को रिस्क नहीं कर सकते। ही हैज बीन ट्रिमेंडस, he has been tremendous last like आई 10 थिंक or 15 matches. तुम आज मतलब जो भी अभी 120 मिनट खेला है वो तो नहीं खेलेगा, मगर फिर भी अगर आपको ऐड करना, सिमी का स्टार्ट कर सकता है, केलहर स्टार्ट कर Gomez, सकता है, Gomez, 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 गोमेस कर सकता है Gomez. स्टार्ट, बिल्कुल हाँ, कौन सा कर हाँ। सकता है। कौन सा करेगा वह, कौन सा करेगा? हाँ हाँ। बिल्कुल। क्लार्क मिडफील्ड करेगा, में मुझे मकानो नहीं करेगा। लगता कि एंडो हम्म, एंडो नहीं करेगा, क्योंकि क्लार्क का हालत मकानो थोड़ी करेगा। खराब थी उसकी। हाँ हाँ उसकी हम्म। ज्यादा ही हाँ, खराब थी उसकी भाई। हालत हाँ। हाँ हाँ मैकलेस्टर उसकी भी कैपेसिटी रिस्क नहीं है, नहीं फिर लेना इतना चाहिए भागना सर। पड़ा, फिर मेंटल हम्म। प्रेशर भी है, और क्या एक्सपेक्ट करे बंदे से, जेन्युइनली और क्या एक्सपेक्ट करे अरे भाई। 200% दे और रहा है वो पिच में और भाई 200% दे रहा है वो, ठीक है वो ना? पूरा गेम उसने पहली बात खुद उसने मार खाई है, वो खुद पीटा भी है, उसने मार भी खाई, वो पीटा भी है भाई। एक हाँ जब उसने वो कैसे जब उसने वो हिलाया ना भाई, मतलब पता नहीं क्या अंदर से खुशी आ गई कि भाई ये क्या है। अच्छा बाइस भाई ने एक क्वेश्चन किया है, इंडिविजुअली हु इज बेटर, एंजो और मैकलिस्टर? Individually, if you take long passing or the deep lying playmakers shut out, McAllister any of the week. Other than that, बहुत equally matched है। एंजो एंजो आप लोग एंजो इज मोर लाइक अ डिसरप्टर। मुझे लगता है कि एंजो इज मोर लाइक अ डिसरप्टर। अगर हम पासिंग रेट की बात करें तो मैकेलिस्टर इज मच 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 बेटर। हाँ
एज अ अच्छा। प्लेयर आप बोलो तो मुझे लगता है कि मैकलिस्टर इज हम्म सुपीरियर प्लेयर। हम्म, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जो अभी बोला भाई ने कि डिस्ट्रप्टर हम्म, या फिर विनिंग द सेकंड ड्यूल्स, सेकंड बॉल्स, हाँ वो एक छोड़ हाँ दो, हाँ हाँ, तो सभी डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि मैकलिस्टर सुपीरियर है। मैकेनिस्टन। आई थिंक हम्म मैकलिस्टर की, मैंने बहुत बार बोला इस सीजन में बहुत जगह पे कि मैकलिस्टर के हम्म, नंबर्स डेक्लन राइस से बेटर है इस सीजन। लोग जो हाँ। बात कर रहे हैं कि साइनिंग ऑफ द सीजन फॉर द प्रीमियर लीग जो हम्म आर्सेनल ने डेक्लन राइस को किया, अब मैं अग्री हम्म करूंगा ही इज वन ऑफ द कंटेंडर, मगर सेम चीज, सेम नंबर्स मैकलिस्टर के भी है, तो हम्म, भले उसको उतनी ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलती जितनी राइस को मिल रही है अभी, मगर क्योंकि मैकलिस्टर भाई नहीं मिलती, क्योंकि बहुत। वो प्राइस टैग है ना, वो प्राइस टैग है ना दर्शन भाई। हाँ बिल्कुल। प्राइस टैग की वजह से वो भी एक मतलब और फैक्टर है। वो प्लस भी है, और इंग्लिश भी थोड़े है। आर्सेनल के फैन भी थोड़े ज्यादा चढ़ के बोलते हैं, हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे फैंस को भी थोड़ा बोलना चाहिए कि भाई हाँ, हम्म मैकलिस्टर भी है, मगर हाँ हम्म। टाइटल जीतेंगे कुछ होगा तो बोलेंगे, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अभी कुछ जरूरत नहीं है। भाई मैं अगर एक गलती सवाल से टाइटल जीत मैं गए ना, हाँ अगर आप हाँ मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो ऐसे ऐसे पोस्ट आएंगे कि यू गाइस माइट वांट टू अनफॉलो अनफ्रेंड मी। अगर गलती से जीत गए, मैं प्रिपेयर कर रखा हूँ, क्या क्या देने वाला नहीं, हूँ। अच्छा, अभी वो वीडियो मैं आई एक है वॉल चेंज करने की। ओ एंड अच्छा अच्छा कल अच्छा मैं ऐसे अच्छा। देख रहा था दैट व्हेन क्लॉप फर्स्ट केम, वो अपना पुराना वाला वॉल था, एंड दूसरे दिन हम्म, पूरा नया वॉल है, सो एवरी सिंगल ट्रॉफी हैज चेंज्ड। मतलब बिल्कुल। सब में एक एक दो नंबर बढ़ चुका है। बच चुका है वो अरे हाँ। क्लब लास्ट वर्ल्ड कप का ऑप्शन ही नहीं था वहां पे, हमने वो भी वो ऐड डाल कर दिया। वो भी ऐड कर दिया हाँ। और कल मैंने एक पोस्ट देखा शायद ट्विटर पे कि अभी हमारे पास 3 गोलकीपर्स है, एड्रियन, कैलेहर एंड एलिसन। तीनों ने कोई ना कोई ट्रॉफी, हम कोई ना कोई फाइनल में तीनों ने चेल्सी को फाइनल। हराया है ट्रॉफी में। हाँ हाँ एड्रियन ने वो यूएफए कप, हाँ। हाँ, और सुपर कप। सुपर कप। एलिसन ने लास्ट ईयर वो एफए कप एंड एफए लीग कप। कप, हाँ हाँ। और दिस ईयर चेल्सी को हराया इसने, कैलेहर ने। So that's a massive thing. तीनों के, और तीन 3 times opponent was Chelsea. बिल्कुल। It's a massive thing. अरे क्लब के अंदर जो हमने 8 ट्रॉफी जीती है उसमें 4 तो चेल्सी को हरा के जीती है। और चेल्सी। बाकी एक में प्रीमियर लीग में भी उन लोग को धोया था, उसके बाद जीता था। हाँ इस हाँ ईयर हाँ भी हाँ। धोया है, वो जस्ट फाइव फॉर थ्री डिस्क्लेमर। आई थिंक द स्कोर लाइन वाज हाँ, 5-3 वो। 5-3। हाँ 5-3 हाँ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट द क्यूरियस केस ऑफ बाइजेटिच। बाइजेटिच को एक्चुअली हुआ क्या है, मतलब और वो कब आने वाला है? आई यार स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। आई मैं स्टिल तो डोंट वही अंडरस्टैंड। कहूंगा कि अभी आएगा ना तो भी हमको उतना ज्यादा खेलते हुए वो नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन आपको देखने को बस मिलेगा, बीच मुझे में नहीं वो आया लगता था कि ना, बीच में वो आया था ना, हाँ, पिच पे यूरोपा आया था, लीग पार्टी मतलब पार्टी बीच में करने के बीच लिए में आया आया था। हाँ, था। हाँ ट्रेन ट्रेन किया था एक सेशन और वहां पे फिर से इंजर्ड हो गया वो, तो अरे बाप रे, थियागो जैसा केस ना बन जाए, अभी तो बहुत यंग है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि बहुत भाई यंग अगले है, सीजन ही बहुत होगा। यंग है। अभी तो हाँ हाँ कोई हाँ मतलब भी नहीं है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है जिसको हम मिडफील्ड हाँ में हाँ खिला हाँ। सकते हैं, तो प्लस बायोटेज का एक और चीज है, आई जस्ट लुक एट हिज एज वंस। बायोटेज इज 19, ठीक है। नहीं, हम्म, मेरे से कम साल का है, उसकी भी बंदी है। चलो, आउट ऑफ दैट, हम्म, बायोटेज इज 19, बट और वो पहले सेंटर बैक था, नाउ ही इज अ सीडीएम। उसका जो जनरल गेम है वो बहुत मतलब वो है, मतलब अच्छा है, बट द थिंग इज कि रिसेंटली अभी बाकी जो यंगस्टर्स है, फिर एंडो वापस आया, उससे भी अच्छा खेला। जो हम्म, उन्होंने वो खेला ना, उसके बाद शायद उसका जो वो कमी था वो कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात, हम्म, बाइजेटिक का जो केस, एटलीस्ट फॉर आई थिंक, इसकी जितना इंजरी नहीं है उससे ज्यादा उसका प्रिकॉशन है। एंड क्लॉप इज वेरी प्रिकॉशनरी। अगर आपका एक भी कुछ इधर से उधर हुआ ना, क्लॉप क्लॉप आपको नहीं खिलाएगा। मतलब हाँ वो ऐसा टाइप का प्लेयर है, मतलब सी यू गो टू एनी अदर क्लब, यू विल सी कि सम प्लेयर की फोर्स्ड आउट ऑफ इंजरी या कुछ भी कुछ। बट हम्म, क्लॉप का मतलब आई सीन दैट, उसने बोला भी है कि वी डोंट वांट टू बी टू वो विद budgetic. And for हम्म, example, this guy Dan, he had हम्म, this some injury which is actually
जब आपकी हाइट बढ़ जाती है, उसके से उसकी बढ़ी थी 5.2 से 6 हो गया था वो विद इन 1 ईयर। सो उसके नी में पेन्स होते हैं, ड्यू टू विच ही कुड नॉट प्ले फॉर 1 ईयर। तो शायद ऐसा कुछ ग्रोथ इंजरी टाइप कुछ होगा, विच मतलब विच इज द रीजन वाई शायद वो अभी खेल नहीं पा रहा। अच्छा, गोइंग बैक टू कमेंट सेक्शन, नाबिल भाई, थैंक यू आशाद जोनो। Next match is FA Cup. If we will choose Adrian as a goalkeeper, will it be good for us? I think because Keller should rest. Explain it, পার্থিব দাদা। ভাই অ্যাড্রিয়ান খেললে আমি ছাদ থেকে ঝাঁপ মারতে পারি। ट्रांसलेशन अगर एड्रियन खेलेगा तो मैं छत से कूद जाऊंगा। बाकी आप लोग बोलो। नहीं यार, केलर को ही खेलना चाहिए। देखो गोलकीपर में वैसा कुछ रेस्ट की मुझे नहीं लगता हाँ जरूरत होगी। और आफ्टर दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट चेल्सी उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा, तो बूस्ट अप हो उसको चुका है। हाँ। खेलना ही चाहिए हमको। हाँ मुझे पता है नहीं, कि अभी सिटी भी है, नहीं है अवेलेबल, अभी मगर केलियर भाई फुल फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल अभी यूटिलाइज करो उसको जितना बने हो। मतलब कैसा प्लेयर है, उसके अगेंस्ट उसको आप बोल दो कि तेरा अभी कैराबो का फाइनल है, तेरे अगेंस्ट चेल्सी है, बाकी वो देख लेगा। मतलब भाई वो इजी चांसेस नहीं थे। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा, वैसे चांसेस ना वो लास्ट 2 गेम में मिस किया है। एक पैर के नीचे से बॉल चला गया, दूसरा उसका पैर गया नहीं। बट चेल्सी अगर, और भाई वो वाला जब सेव था ना कि वो पूरा ओपन था, ही केम फॉरवर्ड, ही वाज लाइक, भाई वो कॉन्फिडेंस सेव था कि उसने दिखा दिया कि ये मेरा अथॉरिटी इधर आने का नहीं। आई थिंक एंड इन केलर के केस में कंपैरिजन ये क्या है बेटर ना चाहिए। पार्थिव के, हाँ। हमेशा आप देखो कि कभी कभी उसकी गलती होती है, मैं मानता हूँ कि यूरोपा लीग में एक बार गलती हुई थी, मतलब 2 गोल जो तुमने बोले वो हुआ। बाकी उसका सीजन ओके ही गया है। मैं वैसा कोई हाईलाइट दिखा नहीं है कि भाई बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। हाँ पिछले मैच में आप देखो जब हमने पहला गोल कंसीडर, वहां पे तो वो था ही नहीं, मतलब हाँ। जो गोल आया ना उसमें 1-2 किया था लूटन ने, और क्लियर हो गया था रॉबर्टसन के सामने। रॉबर्टसन वहां पे था, रॉबर्टसन था या गोमस था, कौन था? पहला गोल लूटन का आया, लेफ्ट बैक हाँ रॉबर्टसन था शायद, हाँ। तो उसने मार्क नहीं किया था, तो इजी टैप इन हेडर था उनका। मुझे नहीं लगता कि वैसा उतना भी बुरा खेला है वो। और जैसे तुमने कहा कि एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आ गया है अभी तो और अच्छा खेलेगा। अब मेजर क्वेश्चन तो यही है कि मार्च 10th कौन अवेलेबल होगा। एलिसन होगा तो अच्छी बात है, हाँ। वरना तो कैलाहर पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है हमारा। कंसर्निंग चीज ये है कि हर एक मैच में ना हम हमारे कोई ना कोई प्लेयर लुढ़क रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत कंसर्निंग चीज है। अगर इसीलिए आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दिस होल थिंग कि और कौन, मतलब अभी देखा हमने कि ग्रेवनबर्च आउट हो गया, एंड दैट लुक्स लाइक अ सीरियस इंजरी। होगा हाँ मतलब ये 8 to 10 वीक्स बोलते हो हैं। जाएगा। हाँ हाँ, हाँ लुक्स लाइक अ सीरियस इंजरी। फिर एंडो भी लिम्प वॉक कर रहा था आफ्टर द मैच। सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू कि अभी कौन रहेगा अवेलेबल, और जो अभी करंटली अवेलेबल है वो 10th मार्च तक रहेंगे कि नहीं, मतलब हाँ, वो वो बहुत ही भी वो भी बड़ा क्वेश्चन है बिल्कुल। वही बड़ा क्वेश्चन है। हाँ प्रेडिक्शंस फॉर साउथहैम्पटन लाइनअप प्लीज। एंड गोमेज था, रोबो बाद में आया था, दर्शन भाई। एंड वो पहले वाला गोमेज था, उसके बाद रोबो आया। प्रेडिक्शन हाँ साउथहैम्पटन लाइनअप, उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे प्लेयर्स रखे हैं। द ओनली प्लेयर दे लॉस्ट प्रॉब्ली वाज लाविया। बाकी उनके सारे प्लेयर्स रह गए, कोई छोड़ा नहीं। कि सारे हाँ हाँ। प्लेयर्स थे, जस्ट लाविया लेफ्ट, एंड लाविया पता नहीं अभी किधर है। भाई मुझे सच में समझ में नहीं, बंदा किधर गया। मैं कल पढ़ रहा था, ट्रॉफीज वोन बाय एंडो 0-1, ट्रॉफीज वोन बाय एलएफसी मिडफील्ड 0। तो वो अंदर से आया। हाँ वो तो क्या बोल रहे थे बंदे चेल्सी वाले के, हमने एलएफसी मिडफील्ड बनाई है। भाई अलग ही है वो भाई। मतलब, शायद इवन भाई अभी कुछ ऐसा बेलिंगम बोल रहा है पोस्ट कि कर रहा है, व्हाट अ हमारी प्लेयर। स्टार्टिंग लाइनअप प्रेडिक्ट करो, ऐसा है। अरे नहीं, हाँ आई मीन बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलो। लिवरपूल की स्टार्टिंग लाइनअप प्रेडिक्ट करने की बोल रहे हैं। क्या लगता चलिए है शुरू गाइस? करते हैं। दर्शन भाई क्या लगा आपसे क्या पहले, अच्छा लगा आप दोनों बोलिए। पहले गोलकीपर कौन होगा? केलर होगा, केलर। केलेयर कलर। सेम है। केलेयर। हाँ हाँ हाँ। राइट बैक। ब्रैडली। अगेन ब्रैडली होगा, मुझे ब्रैडली ही लग रहा है। हम्म। सेंटर बैक्स कौन कौन? कौन सा क्वांजा गोमस? एक। हाँ गोमेस। आई फील ऑल्सो क्वानसा एंड गोमेज। एंड लेफ्ट बैक
सिमिकास। सिमिकस। सिमिकस, हाँ हाँ, सिमिकस, हाँ। अभी मिडफील्ड ट्रियो कौन होगा? ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना मिडफील्ड। और हाँ, यार किससे खिलाओ आप? बॉबी क्लार्क को खिला सकते हो, हार्वी को मिडफील्ड मैकॉनल। में डाल सकते हैं। दर्शन राइट भाई, विंग अगर नहीं है वो। हार्वी अगर, हाँ, हार्वी अगर मिडफील्ड में खेलेगा ना, तो राइट विंग तो हमारा गया ना। तो आई आई थिंक एलियट, आई थिंक कल, मतलब वेडनेसडे को राइट विंग में ही जाएगा, और मैकॉनल और बॉबी क्लर्क शायद मिडफील्ड में आएंगे, बट आई डोंट थिंक दैट एनी ऑफ देम इज लाइक डीएम और समथिंग। मुझे तो लगता है कि कोई भी उन लोगों में कोई भी डीएम होगा। हाँ मतलब डीएम तो अगर रिपोर्ट्स ठीक है फिर क्लार्क एलसीएम, मैकॉनल क्योंकि वो सीडीएम है, हार्वी एलियट सीडी मैकॉनल आरसीएम। को देना चाहिए। हार्वी अच्छा, एलियट आरसीएम बिकॉज मैं रिपोर्ट पढ़ा था कि नियोनी में स्टार्ट, सो नियोनी अगर स्टार्ट करेगा तो वो खेलेगा राइट विंग विंग या पे। फिर स्ट्राइकर। हाँ, अच्छा, 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 वो मतलब भी उसका और अच्छा। डैन का वो इंटरचेंज है, एंड डैन का एक्चुअली मैं देख रहा था ही वाज द टॉप स्कोरर एज ऑफ नाउ विथ अकेडमी। 28 गोल्स। नियोनी, आई क्लार्क, थिंक मैकॉनल, भैया क्लार्क एंड मैकॉनल आपके वो एलसीएम एंड सीडीएम। नियोनी आपका राइट विंग, तो आरसीएम हो गया आपका एलियट। लेफ्ट विंग में आई गेस प्रोबब्ली गैक्पो और वो स्टार्ट करेगा, गैक्पो और डैन। नाबिल खान, हाउ इज काइडे गॉर्डन? ऑनेस्टली केट बता गॉर्डन। रहा, मुझे पता नहीं हाउ इज ही। यार मतलब उसके गॉर्डन, ना कोई रिपोर्ट्स आते हैं, ही हाँ जस्ट गॉर्डन ने डिसअपीयर। हमारे लिए डेब्यू तो किया था 1-2 साल पहले, मगर फिर से वो इंजर्ड, उसकी बहुत बड़ी इंजरी हो गई थी, वो तो 1 साल के लिए ल्यूटन वो के हाँ, बाहर वो निकल। ल्यूटन के अगेंस्ट भी 4 मिनट खेला। मतलब देखो उसका साइज बहुत बड़ा है, मतलब वो like, 1 फीट ऐसा कुछ लंबा हुआ है, बट उसका ना हाँ। मेरे को इनके जैसा उतना कुछ मतलब अप एंड कमिंग नहीं दिख रहा जितना। इवन मैं बोलूंगा बेंडोक हैज मोर सब्सटेंस टू हिम देन काइडे गॉर्डन। वो जिसका बट जितना पेस है, वो बेंडो जब भागता है बेंडो ना। बेन, बट बेंडोक का भी बहुत एवरेज सीजन रहा। मतलब अगर हम सोचे कि प्री सीजन में बेंडो जैसे खेल रहा था, हाँ, अभी उसको इंजरी है कि उसको सही से चांस नहीं मिला, मुझे पता नहीं क्यों, बट नहीं, उसका बेंडोक इंजरी का है भी, भाई, इंजरी है, वो 7 महीने इंजरी के है। लिए हाँ, आउट है, उसका इंजरी है, प्लस भाई उसका वो सीजन भी 17 का है। कभी, हाँ, पता है, मुझे पता है, लेकिन उसके अराउंड जो हाइप था ना, तो वो भी बहुत हम्म। साइलेंट हो चुका है अभी, ठीक है, बेंडोक को लेके। तो आई रियली विश कि वो वापस आए और अच्छा खेले। एंड और डांस के बारे में जो तुमने बोला कि वो हाई स्कोरर है, एंड दैट इज रियली मैसिव, बिकॉज मतलब पिछले मैच से पहले मैंने डांस के बारे में सुना भी नहीं था। इतना अंडर द रेडर जा रहा है, क्योंकि बात ये है ना कि जैसे मैंने बताया कि वो एकेडमी के बारे में वो एक्सपोजर सिर्फ हमको अपडेट्स मिलता है, हम तो देख नहीं पाते ना कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बुरा खेल रहा है। तो जब ऐसा कोई आता है ना, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एकेडमी से कोई सीनियर टीम में आके जब कोई शाइन करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्या होता है साउथहैम्पटन में। बट मिडफील्ड को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लाइनअप में कौन आने वाला है, बहुत मुश्किल है। अगर अगर अब एलियट अगर एलियट खेल रहा है मिडफील्ड में, अगर नियोनी खेल रहा है राइट विंग में, फिर और लेफ्ट विंग में फिर कौन आएगा? डियास तो नहीं खेल सकता, डियास को खेलना भी नहीं चाहिए, आई थिंक। हाँ, यार डियास को रेस्ट चाहिए। आई बहुत थिंक रेस्ट चाहिए उसको। गैप्को को खिला सकते हो। एक एक सीनियर बंदा तो चाहिए ही होगा, हाँ, अगर गैक्पो पूरी टीम। खेलेगा, गैक्पो हम श्योर खेलेगा। गैक्पो एट लेफ्ट विंग, ठीक है, मतलब ठीक है। भाई मैं एक चीज बोलूंगा ना, मतलब गैक्पो हम्म। अगर लेफ्ट विंग में खेलता है, ही इज मोर प्रोडक्टिव देन लुइस डियाज। मतलब आप यू कीप द लास्ट गेम असाइड विद द एनर्जी लुइस डियाज हैज, बट द जनरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द टू प्लेयर्स, यू पुट नूनियस इन स्ट्राइकर, यू पुट गैक्पो लेफ्ट विंगर, ही विल प्रोड्यूस मोर। उसका नेचुरल पोजीशन ही वो है। हाँ, इसमें वो खेलता है, वो अच्छा कर रहा है, गोल मार रहा है, असिस्ट मार रहा है, तो इसीलिए लग रहा है कि चलो ठीक है। उसका हम्म। नेचुरल गेम प्ले थोड़ा लेफ्ट साइडेड ही है इन जनरल। इवन अगर आप देखोगे ना, जब एनी प्लेस फॉर नेदरलैंड्स, वो लेफ्ट पे ड्रॉप करके फिर वो आगे जाता है। इवन जब वो अच्छा। लेफ्ट एलसीएम भी खेलता है ना, वो अच्छा करता है, क्योंकि वो लेफ्ट से उसको उठने का चांस मिलता है। हम्म। बाकी और लुइस डियाज गैप्पो भी चलो ठीक है। अभी गैप्पो अभी गैप साउथहैम्पटन हाँ, वाली बोलिए। मैच तो अभी 2 दिन है ना। हाँ, देखिए 2 दिन में और कौन रंजीत होता है। वेनेसडे वेनेसडे नाइट को है शायद, मतलब थर्सडे थर्सडे अर्ली मॉर्निंग, अर्ली नाइट, जो मिडनाइट होता है उसमें है शायद। हाँ। कल टेक्निकली कल रात को है। नहीं अच्छा, कल, अच्छा, अच्छा। अच्छा कल रात को। हाँ, थर्सडे 1:30, सो आज ट्यूसडे हो गया, मतलब 12 हाँ। बज गए। ओ अच्छा। अच्छा, हाँ तो हाँ हाँ।
हाँ मतलब वैसे कल सुबह उठ के वो परसों रात को ऐसा वाला सीन। हाँ बिल्कुल। बट हाँ मतलब अभी थोड़ा वो बहुत हाई रहेगा मतलब लिवरपूल का। एंड एक मतलब कुछ रेयर स्टार्स रहता है। लास्ट टाइम वी वन द कैराबाओ कप फाइनल, वी डिड नॉट लूज अ सिंगल गेम आफ्टर दैट। ये भी एक बहुत ही फनी स्टैट है। लाइक दीज ये सब स्टैट्स वो मतलब आ रहे हैं बाहर। सुनने बट में अच्छा होपफुली लगता है भाई, हाँ मगर वही सुनना चाहता है। सिचुएशन अपनी थोड़ी खस्ता है। खराब भी है भाई। कब अच्छी रहती है भाई दर्शक, आप सच बताओ कब अच्छी रहती है? जिस सीजन पीएल जीते अनस्टॉपेबल, गोलकीपर इंजर्ड हो गया, एड्रियन भाई 2 गोल खा दिए। जिस सीजन ये जीते उस सीजन आपका सेंटर बैक इंजर्ड हो गया। हाँ मतलब भाई कैसे भाई सच्ची बता यही रहा, होप क्लॉप के है पास कि बहुत एनर्जी है। 3-4 लोग वो वापस आ टाइम जाए है। तो फिर से हम ऐसा रन बना सकते हैं, जैसे तुम बोल रहे हो कि कैराबाओ कप के बाद कभी हारे नहीं है। 3-4 लोग आ जाए, शायद नूनेज, सबोजलाई, साला, और होपफुली भले ही कैलेहर अच्छा कर रहा है, एलिसन वापस आ जाए, ये 4 आ एलिसन जाए। एवरग्रीन। बट हाँ, अगर हम लोग नॉटिंघम जीतते हैं ना, देन एक बहुत ही अंदर से बूस्ट रहेगा कि मतलब वो क्लब पे हाँ जीतना इट्स वेरी बिग बिल्कुल। थिंग। बिकॉज मतलब ये ना छोटी छोटी गेम्स होती है विच विन्स यू ट्रॉफीज। ये छोटी छोटी गेम्स यू हैव टू लाइक बिल्ड अप द मोमेंटम सब, और बिकॉज उनके ना मुझे ग्राउंड लगता है छोटे कि हैं। और नॉटिंघम इजी नहीं रहेगा, मतलब नॉटिंघम बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है ना। नॉटिंघम इजी नहीं रहने वाला, तो अगर नॉटिंघम को हरा दे तो एक ब्रीदिंग स्पेस हम हमारे लिए रहेगा कि ऑल्सो ब्राइटन फीसिंग। अवे मैं और तो वेस्ट मैं हैम तो अवे प्रे भी है। कर रहा हूँ कि यार यूनाइटेड एक ड्रॉ निकाल ले, जो अभी नेक्स्ट मैच होने वाला है सिटी यूनाइटेड का। तो फाइनली उनका कोई वो प्राइड हो कि भाई हाँ मैनचेस्टर हाँ इज हाँ रेड, वैसा वाला कुछ करो यार। हम लोग भी बोलेंगे भाई मैनचेस्टर इज रेड। हाँ बिल्कुल। भाई भाई फुलम से हार गए, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं कि वो अच्छा खेले हार गए, बहुत ही वाहियात खेले थे वो फुलम के अगेंस्ट। मैंने वो मैच हाँ देखा था, लेकिन ऐसे खेलने के बाद मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सिटी के अगेंस्ट कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि मतलब बहुत इवन ही एस्टन डिप्रेसिंग विला के खेले थे। सामने जब वो जीते थे तब भी मुझे हम्म कन्विंसिंग नहीं लगे, उसके बाद भी उनकी एक विक्ट्री आई, उसमें भी लाइक मैं कहूंगा कि हाँ, आप गोल आपके आ गए, मगर आप आपकी वो नैरो नैरो विन कन्विंसिंग निकाल रहे थे वो लोग, नैरो विन निकाल हाँ रहे थे एक बार ठीक से, बिल्कुल। मतलब। और उनका मतलब ब्रूनो फर्नांडिस का ना एटीट्यूड मुझे बहुत गंदा लगता है, मतलब वो क्लब कैप्टन है, उसका एटीट्यूड बहुत बहुत मतलब नॉट अप टू द मार्क। हाँ बिल्कुल। ये तो भाई उसको ऐसा हो लेके गया, उससे फैक्ट खुद के जैसा हो गया सभी लेजेंड्स को ये। बोलते हैं कि भाई मतलब कि कैसा है। एंड सच्ची बता रहा भाई मतलब हाउ डू यू थिंक कि मतलब देखिए वट एवर वी से मैन यू इज अ वेरी वेरी बिग क्लब, नॉट ओनली ट्रॉफी वाइज बट कल्चरली बोले सब कुछ बोलिए। एंड यू आर हम्म लीडिंग दैट क्लब एंड आप एक ऐसा एटीट्यूड रखते हो कि मतलब यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। अगर वो आज एक ट्रॉफी जीत के भी जाए ना, then he would still हम्म be a captain of a club, of a big club at a bad stage. They write books हम्म about this. Like, for example, हम्म someone of like Gerard's stature for us, कि एक हम्म खराब टाइम पे वो था, he led the team. So आप हम्म। अगर ऐसा चीजें करते हो ना, आप अपने आप अपनी लेगेसी को खराब कर रहे हो और कुछ नहीं at this point. हाँ That बिल्कुल। is मतलब भाई प्लेयर अच्छा है, दिमाग अच्छा है हाँ भाई। उसकी रेपुटेशन अभी सभी के मन में यही है उसकी, कि यार प्लेयर अच्छा है मगर थोड़ा एटीट्यूड उसका, स्पेशली जो हाँ ऑन पिच उसकी एक्शंस होती है वो थोड़ी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, कि भाई हमेशा हाँ। रेफरी के कान में बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, क्या ही उसको प्रॉब्लम भाई लेकिन उनके जो खुद के कोचेस है वो लोग मतलब परेशान है, उनके लेजेंड्स वो बोल रहे हैं है। भाई हाँ व्हाट इज दिस गाय। कभी कभी लगता है मेरे को कि भाई वो रॉबी किन पता नहीं डंडा लेके आ जाए कि आ जा भाई आ जा। हाँ आई थिंक मैच ये मैच खत्म होने के मॉडर्न बाद मैं बस में ना चढ़ने दूं, ऐसा बोलेगा वो तो। भाई अगर डेविड रॉबी डियागो किन को मैनेजर ऐसा हो गया बोला ना। था। मुझे लगता है ना, I'm not saying anything wrong against like जेमी कैरेगर और गैरी नेविल और रॉय कीन। मतलब क्या है कि ये मीडिया जो हाउसेस जो है ना, ये लोग जो बोलते हैं ना, अगर कोई क्लब अच्छा भी खेले कोई बुरा भी खेले, फिर इन लोगों के जो कमेंट्स इतने इतने मतलब हार्श होता है ना, इतने हार्श होते हैं ये कमेंट्स कि किसी का भी मॉरल डाउन कर सकते हैं।
मुझे पता है कि ये लोग बोलते हैं कि लाइमलाइट में रहने के लिए, हाँ, बिल्कुल क्योंकि बट बहुत लाइक डिमीनिंग है, बहुत लाइक किसी का भी मॉडल डाउन कर सकते, लाइक रॉय कीन सेइंग कि अगर अगर, अगर अब आप सोचिए कि अगर आज मैकटोमिने बहुत क्लच गोल करके बहुत मैचेस उसने अकेले निकाला है यूनाइटेड के लिए। अगर कल फुलम के अगेंस्ट अगर उसका एक लाइक 1 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस निकल जाता है और रॉय कीन बोलता है कि इसको बाहर निकालो क्लब से, ठीक है ना, क्योंकि वो तो ऐसे ही बोलता है ना रॉय कीन, वो बहुत ही लाइक आउटस्पोकन है। So just imagine कि what that does to the player। ट्रूली वही ट्रूली ना, सही बात है। ये तो एंड बट इन एक चीज इन लोगों को इन लोगों का तो कोई स्टेक नहीं है ना इस ना, क्लब में अभी। ये सब मुफ्त है, एंड ये सिर्फ उनके लाइमलाइट लिए पाने के पैसे लिए। कमाने का वही अभी ये है, पैसे हाँ कमाने का एग्जैक्टली। उनका वही अभी ये है। उनको इवन मैं बोलना ये चीज पड़ता है बोल रहा था कंट्रोवर्सी। हाँ, दैट वरना तो जेमी भाई कैरेगर, भाई सब फैन बेस से कैरेगर को बहुत गालियां पड़ती है, बट अभी पता है मोस्ट मार्केटेबल फेस इन द फुटबॉल कम्युनिटी, मतलब जिसको थोड़ा नॉलेज है वो जेमी कैरेगर। स्काई स्पोर्ट्स में वो आता है, वो पैसा बना रही है। यूसीएल नाइट्स में कैरेगर आता है, वो पैसा बना रही है। हाँ एंड हाँ मैं जेन्युइनली यार बता रहा, मैं ये ट्रैश टॉक के अलावा देयर दिस सेगमेंट, आप लोग भी टाइम होगा तो सुनिएगा, ब्रेकिंग डाउन प्रेसिंग फुटबॉल विथ जेसे मार्श। वो हाँ बिल्कुल कैरेगर का खुद का वीडियो है भाई, द वे ही वाज स्पीकिंग, मतलब आउट ऑफ दिस पर्सन ऑफ हिज की, मतलब आई एम अ शिट टॉकर, वैन डाइक डजंट गेट इन माय टीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ही एक्चुअली ब्रेक्स डाउन सो वेल, मतलब एंड यू कुड लाइक एक्चुअली मैं लिसन टू इट एंड बी लाइक कि नहीं इसको आता है, मतलब व्हाट डू यू अरे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ हाई क्लास लेजेंड। बिल्कुल, और वो भी है, और उसका प्रीमियर लीग के बारे में जो स्टैट्स है, जो नॉलेज है, वो भी बहुत ज्यादा है। आप आपने देखा होगा बहुत सारे वो क्वेश्चन आंसर के कंपटीशन हाँ होते हैं, उसमें भी उसको सभी पता होता है यार। आप कह लो 20 साल पहले का भी कोई पूछ ले कि इस गेम में किसने गोल किया, उसको याद होता है। तो मैं मानता हूँ कि कभी कभी उसके उसके भी स्टेटमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल होते हैं, मगर वो हाँ करना हाँ पड़ते हाँ। हैं एज अ पंडित, कि भाई वही थोड़े न्यूज में बने रहे तभी आपको बुलाएंगे स्काई स्पोर्ट्स वाले, तो इसीलिए हाँ हाँ वो हाँ, करना पड़ता है। लाइक मगर मीडिया हाउसेस ऐसे ही है, मीडिया हाउसेस ऐसे ही है बिल्कुल है ना। बिल्कुल न्यूज में रहने के लिए आपको वो सब मतलब करना ही पड़ेगा। Well, we had a very good chat. Darshan bhai joined us. He was here for 45 minutes. मस्त बात हुआ। Next बात तो हम लोग आएंगी, but इसके before ending, you guys have any last statements, questions? लास्ट स्टेटमेंट तो यही बोलूंगा कि 3 मोर होपफुली। भाई मेरे और ना दिल में एक बहुत होपफुल। बहुत टाइम से आ रहा है कि कैराबाओ सिर्फ झांकी है, बाकी 3 बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, same here. See you for everybody who joined. We had a lot of watching today. Thank you very much. ओके वापस मिलेंगे next. बाय ओके, गाइस, बाय Bye. बाय, अब द रेड्स। Up the Reds. अब द रेड्स।